Okay, hey guys, welcome back to our stream. Right now we are looking at the gold chart. Okay, see in a 1 hour. First of all, what we can see here, let's go to the all the time frame. Okay, and this is our Monday analysis. Some trade I have taken on Tuesday. These are the trade in Wednesday and Thursday and Friday. So many trades has been taken here last few days. You can just rewind our stream. You will get to know that. And yesterday we have captured 250 pips. You can check it out. Okay, this buy from here after the range break, 30 minute. Then after we took a sale, which we got a 78 pips. After we took a buy due to the fair value gap, look at this, 48 pips. After we got again one more buy from this demand, which we got a 70 pips. Okay, then after we closed our stream, and every trade whatever I have taken, you can see this screenshot as a proof in our Telegram. Okay, and this is the trade analysis has been done yesterday. Right now we're gonna look through the all the time frame like 1 day chart. What we can see here that yesterday market has given us a little bit of bearish momentum, but day open with little bit bearish, then again bullish, again bearish. Okay, so market is making a doji. Friday will be like a little bit of a breakout day, and I think like morning it won't be that much of volume, cause evening there will be a market shutdown, right, like midnight. So evening time they will invest, and for that the reason market might be little bit of sideways for now. Again it will go as we know that. Okay, so I will remove this all to do some analysis, so you will get to know that. Right now what we have previous day high is here, so I'll mark the previous day high. What we see here, previous day high is here, right? Yeah, previous day high is mentioned here, so I'll write it down, previous day high, and market previous day low is here, so I'll mark that two zone. If market wants to move, whether it need to hit the previous day's low ASL or previous day high ASL. Okay, so text previous day high. Let me write in caps. Okay, okay, we got a two zone which is previous day high and previous day low. Okay, in 1 day chart. Let's go to the 4 hours. From the previous day low, what we see today is fully market has been in a bullish momentum, but yes, with a low volume, because you can see here market made a spinning top, not in a buy side, not even a selling side. Then again it made a hammer candle in 4 hours, but what happened next, it made a grave candle, gravestone like, and it made a bearish, again it making a स्पिनिंग टॉप कैंडल. तो मार्केट क्या हो रहा है, अभी रेंज हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे. उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम, जैसे 4 आवर्स टू 1 आवर. 1 आवर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ट्रेल लाइन की तरह है यहाँ पर. सो 1 टच, 2 टच, 3 टच ट्रेल लाइन हियर, एंड वन मोर ट्रेल लाइन विल बी हियर. ओके, तो हम लोग यहाँ पर इतना भी क्लियरिटी नहीं देख पा रहे क्योंकि हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं. सो वी विल राइट डाउन ट्रेल लाइन, सॉरी, सो ट्रेल लाइन. Okay, here we have a trail line. Where is our trail line? Okay, here it written. Trail line. After 1 hour, we will go to the 30 minute. 30 minute, what we can see here, this candle open and some weak made a range. तो market यहाँ पर क्या हो रहा है, एक range हो रहा है. You can draw this or you can draw a parallel. Okay, where is the parallel? Fifth channel. I think is it a fifth channel or what? No, not a fifth channel. No, it's not a fifth channel. Or train parallel. Where is it is?
somewhere around here will be, you'll find out trend parallel, where is trend parallel, sure for ghost, okay, price range data, yeah, somewhere around it should be, okay, it's fine. So we have a trail line here, we have a trail line here, मार्केट ऑब्वियसली डूइंग अ रेंज, ठीक है, तो हम लोग अभी बाइंग पे भी नहीं जा सकते, सेलिंग पे भी अभी नहीं एंट्री कर सकते, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट के बाद आप लोग 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे आप देख पाओगे यहाँ पर छोटा मोटा मिनिमाइज करके जे ये वाला, ओके, हाई का यहाँ पर एक ट्रेन लाइन है, यहाँ पर भी एक ट्रेन लाइन है, एंड मार्केट पे आप लोग देख पाओगे कि कहाँ पर सप्लाई है कहाँ पर डिमांड है, ठीक है। तो 5 मिनट पे चले जाओ, 5 मिनट पे आप देख पाओगे कि रीजन लो ए है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया था, लेकिन मैंने ऑल द टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे जब कैंडल क्लोज करेगा तभी मार्केट आएगा एक थोड़ी बहुत बियरिश, आफ्टर दिस कैंडल क्लोज लाइक 91 बिलो, अभी 94 to 95 हो जाएगा अभी वेरी सुन, एंड ये कम से कम ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट क्यों जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पर देख पाओगे 5 मिनट पे डिमांड है ना, 5 मिनट to 1 मिनट भी आप चले जाओ, आप देख पाओगे कि ये जो लो है इसके नीचे और कोई कैंडल ही है, सीधा नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। एंड जितना मैं देख पा रहा हूँ ट्रेंड तो अभी भी बियरिश है, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है, डिमांड विद POI, मार्केट सीधा भाग गया ऊपर की तरफ, लेकिन हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर पूरा रेंज हो रहा है, 30 मिनट 1 आवर पे आप लोग देखे हो कि मार्केट ऐसे ही रेंज हो रहा है, ठीक है। चेक इट आउट, ट्रेड लाइन के अंदर मार्केट रेंज हो रहा है, सो 1 2 3 4 5 मूव अप साइड देना जाना चाहिए, राइट। सो यू कैन कॉल दिस लाइक, व्हाट यू कॉल this here, from here ABCD 5, it's not ABCD 5, 1 2 3 4, you can use that 5 move, okay, 1 move, 2 move, 3 move here, 4 move, 5 move will be like upside, ऐसे मार्केट मूव होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मार्केट को मूव होना चाहिए, एंड मेरा व्यू है ये बाइंग की तरफ जाएगा, क्योंकि ये रेंज करते ऊपर की तरफ ये ब्रेक करेगा 1 2 3 4, तो यहाँ से भी ऐसा हम लोग तो नहीं बोल सकते 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि रिट्रेस एंड रिजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 5 ऊपर की तरफ आपको मिलेगा, ऐसे भी ट्रैक कर सकते हो, बट प्रीवियस हाई तक मेरा व्यू है बाई की तरफ ये मार्केट जाएगा, ठीक है। टेकिंग ट्रेड राइट नाउ इज वेरी रिस्की दादा, हाँ यस, मैं अभी ट्रेड नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ, मैं अभी एनालिस दे रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि अभी पूरा रेंज ही हो रहा है, मैं ये भी बोला मैंने अभी कि आप देख सकते हो 30 मिनट 1 आवर पे अभी क्या हो रहा है, इसके अंदर ही मार्केट है, ये वाला जोन पे मार्केट है, एंड ये वाला ट्रेल लाइन पे ही मार्केट है, एंड 1 2 3 4 लास्ट फ्यू कैंडल्स आर बीन हियर, आप ऐसे भी मार्किंग करके देखोगे तो 1 घंटे पे क्या हो रहा है, रेंज हो रहा है, ठीक है। एंड हम लोग क्या देख पा रहे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट पे चले जाओ, 5 मिनट पे यहाँ पर है सप्लाई, सप्लाई विथ रेजिस्टेंट, ओके, 1 2 3 4, मार्केट यहाँ पर बहुत बार क्या किया, रिट्रेस किया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर बहुत बार रिट्रेस किया है, तो यहाँ पर सेलर्स लोग का स्टॉप लॉस है, लेकिन बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इतना नीचे तो नहीं आएगा जहां पर पहले स्टॉप लॉस बन रहा है, ओके, क्लोजर, तो वहां पर पहले मार्केट जाएगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से अभी इतने सेलर्स लोग हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पर इतना भी नहीं है, क्योंकि बायर्स के लिए इतना भी अच्छा खासा कोई डिमांड नहीं है, ना है कोई ऑर्डर ब्लॉक, ना है कोई फेयर वाली गैप की मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, क्योंकि रेंज हो रहा है, तो रेंज पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग ही आया है, यहाँ पर सेलिंग किया है, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग, तो ऑल दिस एरिया आर इन सेलर्स, यू कैन सी दैट सेलर्स आर स्टिल इन डोमिनेटिंग नाउ, बट द बायर्स कहाँ पर है, बायर्स अभी यहाँ पर है, एक जो भी आप बोल सकते हो POI उतना डिमांड आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट दैट 5 मिनट पे अभी आपका कोई बायर्स देख नहीं पाओगे, ठीक है। जो भी था ये डिमांड से भाग गया ऊपर की तरफ, अदरवाइज यू कांट सी एनी जोन,
तो मैं छोटा मोटा मिनिमाइज करके भी देख रहा हूँ, तो अभी तो मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बट आप लोग देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो कि कैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। प्रीवियस डे लो है एंड प्रीवियस डे हाई का ये जो जोन है ये है प्रीवियस डे का हाई। मार्केट एक ट्रेंड की तरह फॉलो कर रहा है एंड एक पैटर्न बना है जो रेंज हो रहा है, ठीक है। एंड हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 मिनट का एक सप्लाई विथ रेजिस्टेंट, एंड यहाँ पर ऑल आर दी सेलर्स आर सिटिंग हियर एंड वो लोग सेल कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बट मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट अभी जाना चाहिए प्रीवियस डे हाई, ये वाला रेंज भी ब्रेक करेगा एंड ये वाला रेंज ब्रेक करने के बाद और भी ऊपर मार्केट जाएगा। तो मेरा व्यू है बाई की तरफ, लेकिन मैं अभी ट्रेड नहीं ले सकता जब तक ये वाला जोन ब्रेक ना करे। इफ इट ब्रेक द जोन then I will go for the buy and I will share the okay analysis in our telegram. So any other view you have, let me know. I think 4910 FVG or 4010. Okay, is it? Let's see. Market can collect a buy side in 5 minute liquidity. 4010 to 4016 can be a selling area. Okay, so let's see. So both of you have given your analysis. आप लोग आपका जो एनालिसिस दिया हो वो भी हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे, वो कहाँ पर क्या फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पर क्या है, सो दैट आपका भी जो भी डाउट है इट विल बी क्लियर। ओके, सो मार्केट कैन कलेक्ट अ बाय साइड लिक्विडिटी, जहाँ पर है वो है 4010, 4010, हाँ 4010 विच इज यहाँ पर आपका व्यू है कि यहाँ पर बाय साइड का लिक्विडिटी है, मतलब ये तो ट्रेड लाइन की तरह फॉलो कर रहा है, तो यहाँ तक तो जाना तो चाहिए, मार्केट नीड टू गो राइट। दैट्स आल्सो व्हाट आई थिंक। ओके, एंड व्हाट टाइम फ्रेम यू गाइस सी एफवीजी 4910, लाइक यही, व्हाट्स योर नेम ब्रदर, समीर, राइट? कौन सी टाइम फ्रेम पर यू आर लुकिंग एट एफवीजी, लेट मी नो। आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है? क्योंकि 4010 if you guys are looking, maybe I think a long time frame you guys are checking out. Okay, so here you guys are looking, okay, yeah, got it. 30 minute, right? But 30 minute we can see the 4003, not 40010, but if I use 10, yes, 10, we have a order block and we have a 04. So that will be the our next selling area. Okay, due to the fair value gap is here 30 minutes. Yeah, I got it, brother. Just now I checked. Okay. So I will remove this okay, this analysis and all. And you can check every day's analysis through our live stream. Okay, so yeah, 4010, you can see this trade yeah, fair value gap, right? So your view is that market gonna come up to this fair value gap. Yeah, that is a good zone for a selling side. Reason you can see that new fresh inducement area, like retracement area with a FVG. That's true. Okay, and yeah, that means we will get a buy minimum like up to 02 from where, from 1999. That means like 30 pips you will get a okay. Huh? Okay, বাইরে দিচ্ছিস? চ্যাটের জন্য চ্যাট নিবি তো, ফোনটা তো ফোনটা অন কর, ফোনটা অন করে কম্পিউটার অন করে ফোনটা রেখে দেবো। Okay, so you can understand. Sorry for that. I will try to add subtitle. নেই, कुछ भी नहीं है, फाका तो दावा আমাদেরকে।
Yeah, sorry for that. Still, we are looking at gold chart, and it's quite range in market, right? What we can do, we have to wait for breakout, then we can go for buy. Huh? Look at the chart for 15-minute Wednesday to 5 November 15:30 to current market is following the trend line. If market wants to go upside, then it will collect the buyer's liquidity by going to the 4010 to 15. Yeah, I got it, brother. Same things from here to here. It's doing in the range. That's true. And from 5 November, yeah, from like here something. Yeah, I see the same things. And my view is also in a buy side. But we can't go for the buy until we have a proper zone for taking entry, right? We have a fair value gap which is 10 to 15. Market will go 12, then might come selling 12. Okay. Okay, why you not make account to XHedge to copy trade for you? No, I don't want like anyone to say something, right? I do personally. If I do copy trade, I can do that, but the thing is like I'm not interested in that. That's the reason. But I will think about that to copy trade. Because sometimes I take trade and some days I don't take trade. Like per day I take only one trade if I get a zone, and if I make a good amount of capital, then that day I take off. Maybe next day also I take off. And some of them are not happy with that, right? So everyone want like 3 to 4 trade in their account. Is it whether it is profit or loss? They want to see some trade is going on their account. That is the reason. And Saturday, Sunday, I don't do that much trading. That's the reason. But I will think about that. Okay. So I'll think about that doing the copy trade. No. এটা অন করে রাখবো? Yeah, that's true. Okay. So yeah, I hope you got the analysis. But the thing is, we couldn't take a trade due to the range and due to the sideways market. But if you guys are learning, I would like to say you guys can like our stream and share with your friends, those who are interested in trading, so that it will recommend to everyone else, those who are like beginners, those who are like want to learn in trading. And yeah, that's what I can say. Do like our stream, and if you are new to our channel, I would like to say you can join our Telegram where I do share this type of analysis too. You will get your analysis here, but if you're busy and if you can't watch our live stream, then you can get an update in our Telegram. Usually we share all this trade, and some trade I take personally
and some trade given by our team members. So we have a team with a community, and I would like to you guys also to join and support us, right? And if you are new to our channel, and if you are watching, and if you are learning something, so you can like our stream. I would say that's all. And have you guys taken any trade? You guys has taken any trade? In 30 minutes right now I'm looking at gold. I can see like quite ranging, and I'm just waiting for this breakout 4,000. If it break 4,000, then I would like to go for the buy after the retrace, not directly I will enter, but sometimes market goes directly without do any retrace. Yeah, and that is a fair value gap. I don't think will it work here. The thing is already market tapped this fair value gap and it did a retrace. We know that one zone is used for only one time, and if it works then lucky, but I won't suggest you can go sell from here, this 02 to 10 area. The reason is already we marked a fair value gap here, and you can see the fair value gap tapped a market and started to fall until the trail line. So no more, I won't say you can use this zone, but if you have a capital, then you can use this zone for taking trade, but I'm not using it. Okay, and already you got a one time retrace. So my target will be like previous day high for now. And if you guys are watching, like you told me like 10, 12 or 15 you will get a retrace, but for me I don't think so. Okay, the reason already this zone has been used. If it works, that means it's a 50-50 chance. It's not like 100 percentage it will go. You can use, you can't use your like high good capital, right? Like that. Tell me in comment box what you see. I see buy. My views in a buy. The thing is market is doing a range. That's the reason I couldn't take trade. If you guys have a capital, if you have done your analysis, then I think you can do and you can take trade. Look at this. Market is trying to break, and I mentioned you like market gonna go buy from here due to the 1 minute demand. Okay, you can see that it's breaking, and if it breaks we can go for the buy, right? What's your thought? Let me know in comment box. In small minute, okay, in 1 minute we can see it's doing a breakout. Okay, the thing is, yeah, it will go in a buy side. That's my view. From where do you guys see a buy? I'm just waiting for the candle to close and we can go for buy. Let's go 4010. Yeah, we will go for the buy, but the thing is, from where should we take a buy? That's the question, right? Did I shared a image on your WhatsApp? Okay, let me check. It hasn't come, brother. Okay, just now. Okay, here. Okay, your view is like from the below zone, right?
Let me know the entry point, like what is the number of entries on. Like 1 minute we can see some trend line here, but there is no proper confirmation. I just want to see it need to break this high so that we can go for buy. We can't enter early. Okay. Have you guys entered in a trade or you guys are still waiting for your perfect zone? Still waiting for a perfect zone to enter. The thing is, there is no fair value gap here. If it were there is a fair value gap here, then I would have entered directly. I couldn't see any fair value gap, nor even a order block. I buy at 99 small lot TP at 4. Okay, yeah, that's great then. And I would suggest you can keep your vessel like 92. That will be a perfect, not more than that. And even I'm also planning to take a buy, just waiting for a candle to close in a 5 minute. Because if I enter early, that would be the problem. So let's see. Market is already right now. That's a very complicated for the at 4,000 level. That's true. I'm just waiting for the break this zone. Okay, if it form a 5 minute candle above that, I will enter a trade. That's the main problem here. We are looking at the buy, but we can't hold our trade due to the range of the sellers here. But it need to go upside. But the thing is, if you have a capital to hold, then it will be a perfect. But usually we don't have that much capital, right? Everyone. We use proper risk management. Then if you ask me, then that would be a problem to hold the trade.
Okay, let me see the candle close. After the candle close, I will enter in a buy. 5 minute. Still, we have a 3 minute more to close a candle. Yeah. Okay. Okay. So I'm ready for taking a buy. Okay. I think I have to enter with a low risk for right now. Then I have to add one more if it comes down. So first enter I'm taking with a low risk. Let's go, brother. ट्रेन में चढ़ना नहीं दिया. आप lower entry कर लो अभी. एक छोटा सा risk ले लो. If you get here, then you can enter one more, right? Let's go. And you'll get a good buy.
Have you guys taken trade? If you guys haven't taken a trade, trade with a low risk and you can keep your risk like here. Okay, like 98 below you can keep it. And it's quite like 40 pips right now. मार्केट निकल जाता है, वो वेट करना नहीं देता है, तो आप लोग अभी भी एंट्री नहीं किया तो एक 0.01 पे अभी ले सकते हो लो रिस्क पर. देन व्हेन इट कम्स टू योर जोन व्हिच इज कॉल्ड हियर 1998.6, तो फिर से और एक ट्रेड ले सकते हो, राइट? Again you will get a buy from here if it comes here, ठीक है? If you haven't taken a trade, if you just miss the trade, वेट करना है यहाँ पर फिर से आने के लिए. यहाँ पर आ जाए तो फिर से एक बाय ले सकते हो. I think it tap, right? Yeah. It's okay. If you do a retrace again, then I would say you can try taking a buy from here again in the same zone, right? And actually, it already crossed a 50 pips. From here, it crossed 30 pips from above this zone. Oh, 40 pips. How many of you have taken this trade? How many of you are holding this trade? Let me know.
मैं इसका हाँ, हाँ, एक तो भी थे हट हट कैंसिल कैंसिल नहीं कैंसिल हाँ बोल okay, so if you guys are new to our channel, please do like our stream. I can see that many of you haven't liked our stream. Do like, and I know many of you have subscribed our channel. So thank you for that. And if you haven't, if you guys are watching, please do like and subscribe our channel, and you can share with your friends. So please, you can do that to support. It's going very well. It need to go upside. Okay, how many of you are still holding this trade, or have you guys entered this trade? Let me know. You guys entered in this trade? Yes, no, let me know in comment box.
If you haven't entered, I would say you can enter with a low risk. You can keep your SL here 90-98, minimum like 40 pips, okay? And from this zone again, it's a fresh retrace area. So if it comes here again, you can enter in a trade. A little bit of mid risk. You can enter with a low risk now. Then again, when it goes up, you can enter with a high risk. Okay, from here. So give me a minute. You can see our trade, I mean like our explanation and the execution. Check it out, we told you enter with a low risk. When it goes again down, you can enter with a mid risk. It pumped, brother. Let's go, brother. Let's go. Check it out, okay? Check it out and let me know. It pumped, guys. Very well. Let's go, brother. What do you call it from here? Just ooh, super.
Check it out, guys. Check it out. Oh, wow. 95 pips, guys. $85 here. Are you bought? Yeah, I just took one low risk. Yeah, I took from here 4,000. Not in this account, but I took it personally. And I shared this trade in premium group. And it's been deep. Yeah. I hope you took this trade, right? I hope you took this trade. Because you told me that you have taken from like 95, right? Yeah, you told me that you have taken from 95. And I shared this analysis in our Telegram, like in premium group. Look at this. From here to here is 92 pips. Okay. Okay. Yeah, 95 to 4010. Okay, so almost I think you just made it. Where's my image? Yeah. Congratulations, brother, for achieving that. Yeah, let's go. Let me see. Okay. Check it out. Okay.
Still need to go. Still it need to go. Let's go. And if you guys are watching, please do like our stream and support me because this is my new channel, okay? And you can join our Telegram for more update, more analysis. While I'm not doing streaming, you will get an update in our Telegram. So that's the reason I'm telling you to join. And one more thing is that share with your friends. So if you have like anyone interested in trading or and also they are a beginner, so they can join, they can take this trade, understand the market. It was very clear, right? Trend line, as I mentioned you that it is a bullish. I told you that market will be in a buy side. I should have taken a buy from here due to the 1 minute demand zone area market tap, but I thought okay, let's not take trade now. And even I didn't take here personally. I took there. On the way, guys, on the way. Check it out. On the way, guys, on the way.
Let me see, let me see. Who is still holding this trade? Let me know. I think Samir is holding. What's the name, brother? Like Ahi. What's that, brother? Like it's new to here.
You can check it out, the trade which I have mentioned you here, the same trade I have taken in our Telegram with a proper analysis given you there. There's photos. Okay, tell me in comment box, guys. It will go upside. Okay, so if you guys still holding this trade, you can hold this trade, and you can check it out Telegram. We have mentioned that in our premium group with the proper analysis. Whatever did analysis here, the same things I have shared in our Telegram. So check it out. Let me know in comment box what you think. And I just wanted to. Who is still holding this trade? Let me know in comment box. I see like Samir is holding this trade, except that anyone else holding this trade. Okay, you're getting a rejection due to this here interest point, but I don't think so. Okay, I don't think so. It need to go upside. Check it out. Okay.
Look, this is what I was telling you, that it will go upside. Capture profit 110 pips, bro. 110 pips. Check it out. We shared this trade, we shared the analysis there in our Telegram, so that if you're a beginner, you don't have to worry. Just follow the our point.
who are really taking this trade. I see like only Samir has taken, no one else. You can check it out Telegram. Telegram I have shared Telegram link in bio. The reason of buy, the reason of this trade. Okay. And I when I started this stream I mentioned you that market is in a buy. Mentioned you that market is in a buy, just wait for the breakout. And I told that if it doesn't do the retrace, that's fine, take a low risk. If you do a retrace, then you can enter high risk. And if you have entered from here, then you gotta like all the way to the 100 pips, right? Follow the concept, understand the market, and you will make the profit. So single trade has given us continuously in a buy, it's doing a range. And if you follow and see that it's still in a like a trail line, it's still following a trail line. Here it's following the trail line again in a small way, 5 minute time frame पे. So it will break upside, don't worry, and you will get a buy side profit. This is the exact trade and the analysis I have shared in our Telegram. Check it out, follow the concept, understand the market, and if you have the doubt, then you can ask me. We will do the analysis and we will tell you full clearly. And the elite weight says that it will go up to the previous day high. And if you do the rejection, that's fine. You already made 100 pips of profit, so you don't have to worry for that, right? Give me a minute.
So what do you guys think? Before it tapped like proper zone, market started to do retrace. Our view was to in a buy side. Still, our view is in a buy. If I look at the candles in 10-minute, 15-minute time frame, we didn't expect market to do a retrace from here, like small candles of rejection. My target was to hit the previous day high, okay, and even same target till now. But we can see like some order blocks are here, some fair value gaps are here, similar, okay, minor, and from that zone, market doing a retrace, which is we didn't expect that. Our view is that there are so many sellers are here, okay, they push the market down. As I mentioned you that there are so many sellers are here, they're gonna hit the resell. It's gonna hit the resell, I mean, and it did hit the resell. And if it's really following a trend Eloyd wave base, then it need to go little bit of, okay, so like that. If I track this, is it correct or what? Yeah, it tap like that, okay. Let me see, just give me a minute. Okay, I'll just drag above so that I can see the clearly. Okay, here it is, candle closing and all. Give me a minute. Infrared, just use this infrared for a while. No, infrared, not this one. Just give me a minute. Mm-mm-mm. It's a vertical, it's a horizontal, so I'm not looking for that. Ray, okay, maybe this ray would work. No, it's not this one. Just now I used. Not this ray, okay. Yeah. If I drag from here, it already tapped. Usually, if we look at this way, then we can see that it tapped this zone. That is the reason market is falling a bit. But our view is in a buy side. Our target will be the previous day high. You know that whenever markets want to give us a 50 pips in a buy side, at least it do a 20 pips in a retracement, right? So I think it's the zone area market is doing a retrace. After the retrace, we will get again a good buy side move. So don't forget. I hope you have taken this trade and made some book. Okay. So almost 4010.
You will get a 40 pips of down move. Okay, market try to do a retrace. Then from here you will get a buy again. If I look at the 5-minute time frame, what I can see right now, market has been changed the direction and it changed the trend. Before we were in a bullish, right? We saw that it break this resistance, all the sellers have been came out. And if you look at right now, it tapped this area, this trend line, okay, ascending trend line. And after that, if you check it out, there is some candle gap here in 5-minute time frame. First candle, second candle, third candle, and from that gap market came and did a retrace and started to fall. It need to fall a bit, like here 4001, it will fall to maximum up to here, this around here. तो यहाँ तक तो भाई आएगा मार्केट जितना मैं देख पा रहा हूँ. Okay, but I can see that market will fall up to here. Where do you think it will do a retrace? What I can see here, market need to come like it tap in fair value gap and need to fall up to here this range. Then from this range you will get again now one more buy like that. And from way up to here I'm expecting a sell due to there is a similar minor order block. Recent low is here, recent high is here. I will drag a Fibonacci. What I can see 0.5 where I mark the order block, that is the Fibo retrace 0.5 to 0.6. So maximum like here you will get a rejection to here. So 4001 99. That means 20 pips. Okay. What do you guys think while looking at this market? I'm waiting for the retrace. Okay, I'm gonna take a re-entry buy from here because this is the free zone breakout. At least market need to come to this area to do a retrace. Then only I will go for the buy.
Okay, let me know in comment box what you think. What do you see in market right now? What if you ask me what I'm seeing right now? I can see here market touch this trend and started to form a bearish. Okay, many of you have taken sell from here. Many of them has booked their profit in 4010. And what I can see here, after it tapped this, market made a huge big two candle in a 5 minute time frame. After that, you can see market came and did a retrace where there is a like retrace area like 1 minute or 5 minutes. If you check it out, so many supports are here. From this support, market gone up continuously. Then after, if you see there is a gap here, you can call this as a fair value gap, and from this fair value gap market started to fall. If it goes and cross above this like 7, then again you will get a bullish momentum. Otherwise, due to the sellers are here, it will fall, it will make a fall. And this is my analysis. Let me know what is your analysis and what do you see. What do you see in gold right now? What do you guys think? Tell me in comment box. I'm not taking sale trade, but I'm telling you, if you guys are planning for taking any trade, or if you guys think that it will go for sale, I usually don't see sale because its trend is bullish, but here is the rejection area. Okay, and you can see the gap here. That is the reason you might get a sale from here. And if you guys take, I'm not taking, I'm just telling you, like you can keep your ASL 20 pips from 6.6 to 8. Okay, that would be your ASL, and cut your trade in 1 minute candle close. Like from here to here, you will get a sale if it works. Okay, and there is no proper confirmation. By looking at this, I can see here is a candle which can make you a retracement. And if you guys are entering this trade, let me know in comment box. Or if you are not taking this trade, tell me that also. And I can see that many of you haven't liked our stream. Please do like our stream, share with your friends, so that you will get a notification and you will get an update. You can check it out our Telegram. Each trade, whatever taken here, same analysis has been shared in our Telegram. So if you are not watching our Telegram, I mean YouTube, then it's okay, but you can get that same update in our Telegram. So better don't forget to join our Telegram and do like our stream. Many of you haven't liked our stream, so please do that. Okay.
क्या देख रहे हो मार्केट पे मेरे को बताना। यहाँ से आप लोग सेल देख रहे हो या ये वाला ब्रेकआउट कर देगा। आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड and this is not any financial advice. Okay, so what you can do, if you are planning to take a trade, so check it out. You have a capital, do the analysis. I'm not taking this trade, I told you. Okay, the reason of this trade is that there is a gap here and you can see so many of like 1 minute candle close. Okay, like here you can see the big gap here. So that's the reason market need to fall. Already it tap one times, and this is the second time market tap. If it works, it's fine. If it doesn't, you can come out from the trade. Okay, or if you guys still holding any trade, let me know in comment box. My buy trade is still in a hold. I booked most of my profit and I'm holding some of my trade. As you, I think you have taken this trade, right? And you made profit. Are you guys still holding this trade? Let me know in comment box. And I think you guys can do like our stream to support. And you can see our target is here like previous day high. That is my target, and I have mentioned this in our Telegram. So like our stream, guys. I can see many of you are watching but haven't liked our stream. What are you guys doing? Do like our stream. Do like our stream, guys. If you guys want me to analyze other currency, let me know in comment box what currency should we do analysis right now. What currency should we do analysis? Let me know in comment box.
Okay, like here we have to write down like STAD. Okay, so first trade we took and we got 100 pips, right? So today trade we'll write down. Okay, like we'll write that today journal. Okay, how many trade can we take today, how many trade can we make profit. Okay, today journal is this, today journal, and yesterday journal also we will write down. So today we took one trade, today journal one trade, and which is 100 pips, shared in Telegram, mentioned you here. You can go for the buy. So first trade we took got 100 pips. Okay, 100 pips captured. Right now I'm not taking any trade at all, just looking at the market. What happening in market, guys? 925. Okay. Hi brother, what's up? क्या हाल है? और बताओ क्या हाल है? ये मेरा कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, मार्केट लो। मैंने सेम यहाँ से ही सेल लिया है। ओके, सेल लिया हो तो ठीक है, मैंने अभी सेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेल जाना भी एक रीजनेबल है यहाँ से, लेकिन मैं ट्रेंड को देख रहा हूँ तो बुलिश है, इसीलिए मैं इस ट्रेड नहीं लिया। आपको सेलिंग मिलेगा 50 पिप्स, मे बी 100 पिप्स, यहाँ तक तुमको सेल मिलेगा 4000 तक, एंड 4000 तक आपको सेलिंग मिलेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत डाउट है ड्यू टू दी 0.5 रिट्रेसमेंट है, एंड फेयर वाली कैप है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत बाइंग भी आपको मिलेगा। सेल लेवल मैं सेल नहीं ले रहा हूँ, बट अभी भी तुम सेल करना चाहते हो, यू कैन डू सेल। ओके, 7 पे अभी अभी सेल कर सकते हो। इसके ऊपर एसएल रखना पड़ेगा 10 के ऊपर, है ना। आपका टारगेट मिलेगा 4000 तक ही, तो 70 पिप्स आपका टीपी रहेगा, एंड 30 टू 40 पिप्स का आपका एसएल रहेगा। दैट वुड बी दी एसएल एंड टीपी। बट मैं नहीं ले रहा हूँ सेल, क्योंकि मेरा ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ बुलिश है, एंड मैं प्रीवियस डे हाई तक मैं कैप्चर करने के लिए वेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सेलिंग नहीं जा रहा हूँ। सेलर्स विल बी लाइक, यू कैन मेक अ स्कैल्पिंग। आप सेल ले रहे हो तो आप सेलिंग पर स्कैल्पिंग ही कर सकते हो, लेकिन बड़ा टारगेट होल्ड नहीं कर पाओगे। रीजनेबल रीजन क्या है, आप यहाँ तक आपको मिल जाएगा, मिले तो 4 to 8 7, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर चला जाए तो आपको ट्रेड को कट करना पड़ेगा 10 के ऊपर। 1 minute can you close, you can come out, otherwise डोंट ट्राई टू टेक अ सेल। मेरा तो सेलिंग का व्यू नहीं है, फिर भी ड्यू टू द ट्रेंड लाइन है, तो आप लोग चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा हूँ। सुबह से मैं एनालिसिस किया हो तो मेरा तो प्रीवियस डे हाई तक मेरा टारगेट है, एंड आई एम होल्डिंग फॉर दैट। आप लोग बताओ, आप लोग क्या देख रहे हो, व्हाट डू यू सी इन गोल्ड? इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो और भी ऊपर जाएगा मार्केट बाई 10 से। ओके, अब वो 10, if it candle close you will get a more buy।
आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे, लेट मी नो। एंड गाइस प्लीज टू लाइक अवर स्ट्रीम, जो जो देख रहे हो थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दो गाइस। लाइक कर दो स्ट्रीम को एंड share with your friends those who are interested in learning trading, and don't forget to join our telegram. I can see that many of you are watching our stream but most of them haven't liked our stream, so at least you can do like our stream, ठीक है। स्ट्रीम को लाइक करके आप लोग बताओ आप लोग का क्या व्यू है, what you guys see in gold। थोड़ा साइड पे चला गया। चलो चलो, क्या देख रहे हो आप लोग गोल्ड पे, फटाफट लाइक कर दो गाइस, फटाफट लाइक कर दो तभी नेक्स्ट एनालिस्ट पर हम लोग जाएंगे। एंड इफ यू गाइस वांट एन अदर करेंसी लेट मी नो, आप लोग कौन सी करेंसी पर ट्रेड करना चाहते हो, इवन दो यूर टेकिंग ट्रेड, ओके। More than 100 pips, wait। Check it out, check it out। Are you guys watching our stream? So yeah, many of you have liked our stream, many of you haven't liked our stream, कर दो like, share your friends। एंड उसके बाद कौन सी करेंसी पर हम लोग एनालिस करें, लेट मी नो। गोल्ड तो चल रहा है, ये सीधा ऊपर ही जाएगा, मेरा प्रीवियस डे हाई तक टारगेट है, ठीक है। फर्स्ट एड पे अभी भी कैप्चर तो किया हुआ, अभी भी इसको फ्लोटिंग पे चल रहा है मेरा, ओके। इट शुड बी क्लियर राइट, आप लोग देख पा रहे हो क्लियरली कि प्रीवियस डे हाई कहाँ पर है, प्रीवियस डे लो कहाँ पर है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर ट्रेल लाइन है, ये देखो ट्रेल लाइन विथ ए लाइट वेव, A to 5, ऑल दिस थिंग्स मैंने मेंशन किया हूँ, तो क्लियरली आप लोग देख पाओगे। और क्या चाहते हो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आप लोग कोई कुछ देख रहे हो तो बताना मेरे को। एंड दूसरी करेंसी पर हम लोग जाना चाहते हो कि वी नीड टू सी अदर करेंसी, तो आप लोग बताओ कौन सी करेंसी पर हम लोग ट्रेड करें।
बताओ गाइस, बताओ क्या देख रहे हो आप गोल्ड पे। टेलीग्राम लिंक इन बायो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हो, तो कर दो ज्वाइन। ऑल द वे टू 100 पिप्स कैप्चर। ये वाला ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो बाई का ट्रेड, वॉट एवर आई डिड एनालिसिस, कहाँ तक जाएगा, वॉट एवर, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन देयर clearly. So if you don't understand, at least you can read whatever we have sent in our telegram, like the reason the market appears to be in a bullish phase currently, the wave 5 of a lightweight pattern.
So we're gonna take a re-entry buy from here. Okay, and just check it out. Market is moving in a range and giving us a little bit of profit. So if it breaks, then only we'll get a good buy side move. Otherwise मार्केट फिर से रिट्रेस करेगा यहाँ पर 4000 पे, 4000 से एक बाई जाएगा, धीरे धीरे करके रेंज हो रहा है, रेंज करके यहाँ तक आएगा 4000, देन ओनली बाई साइड. सो लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन, चेकआउट करते हैं.
I'm checking the market. What I can see here, market is doing a quite range. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो धीरे धीरे करके मार्केट रेंज हो रहा है एंड यहाँ पर भी छोटा मोटा 15 मिनट पे एक ट्रेड लाइन भी है. So I will show you this analysis in trading view so that you can check it out clearly. Like here you can't see, sorry for that. Okay, give me a minute. Right now I hope you will see. From there you can go there. Yeah, check it out in 15-minute time frame. What you can see here, market like tap in this trail line with a proper retrace on area. That's the reason we are getting many times of buy move. And there is no proper order block, but if you see here, this is our previous day high with a supply. Okay, previous day high with a supply here. So market has potential to go upside, or if it break this here 4.4003. Okay, 003 breaks, then we will target for the sell side up to here. हमारा सेल ट्रेड रहेगा यहाँ तक. इसके अंदर आपको बार बार आपको रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, रिट्रेस मिलेगा. तो आप लोग चाहते हो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट के बाद यू कैन टेक अ सेल. गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक. या यू कैन सी दैट. ठीक है, तो ओके नाउ इट्स फाइन. या तो यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकता है, वो भी यहाँ तक. इसे कहाँ पर रखना है, इस वाला कैंडल के ऊपर ही रखना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएल हिट हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगा. यहाँ पर जो भी है प्रीवियस डे हाई को टैप करके उसके बाद सेलिंग गिरेगा. मैं अभी सेलिंग नहीं ले रहा हूँ, आई मीन अ बाई स्टिल नाउ. ठीक है, एंड मेरा बाई यहाँ से चल रहा है.
So in 1 hour time frames, as you can see, market is still in a quite range. Like you can see here, it's making a doji with a spinning top, okay, making a hammer. And due to the trend line here from up and from this down, market is doing a quite range. And you can see that due to that, we can't take any trade. Already we took one trade which we called more than 100 pips from here. You know that I have marked, I have mentioned. And you might be thinking like why market is going a move from here. The reason is here is the fresh supply here. Market came and tapped in this and got a rejection. From this rejection, market gone again. Many of them has to buy from here. Those who understood the market, they made again over 100 pips from here. But overall, we took a buy from here, and from here to here, we actually made a 140 pips. So okay, 140 pips we have made. Look at this, 140.4. We have made this profit, and still now it's still going on. But आज फ्राइडे तो मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज पे रहेगा, रेंज करेगा मार्केट. आफ्टर द रेंज ब्रेकआउट यू विल गेट अ प्रॉपर मोमेंटम. दैट इज़ द रीज़न मार्केट धीरे धीरे करके मूव हो रहा है. कोई व्यू नहीं है गोल्ड पे. आप लोग बताओ, आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे, एंड देखने के बाद मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना आपका क्या व्यू है, ठीक है, एंड आप लोग क्या एनालिस कर रहे हो गोल्ड पे. मैं तो अभी देख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत तो रेंज हो रहा है. रेंज के वजह से हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है. आप देख सकते हो 1 2 3 कैंडल, एंड मेरा टारगेट कहाँ पर है, 109. ओके, 4019, यहाँ तक मेरा टारगेट है. बट द थिंग इज हैपनिंग हियर इज मेकिंग अ 3 साइडवेज कैंडल एंड इट्स डूइंग अ रेंज. ठीक है, रेंज पर ही देखो मार्केट सीधा 100 पिप्स के ऊपर जा रहा है, 100 पिप्स नीचे जा रहा है. एंड ड्यू टू द ट्रेंड हियर, तो इसीलिए हम लोग के पास बार बार सेलिंग मिल रहा है. एंड यहाँ पर सपोर्ट है, इसलिए बार बार बाइंग जा रहा है. तो बोथ आर वर्किंग हियर इन दिस रेंज. ठीक है, तो आप लोग देखो, लेकिन आप लोग ट्रेड मत करो अभी के लिए. अभी पर ट्रेड मत लो. बट व्हेन इट कम्स टू योर लाइक प्रॉपर रिट्रेस इन 1 minute or fair value gap and order block, then take a trade. Otherwise you might get us, okay, stuck in this zone without any making profit. So I won't suggest for that. 30 मिनट पर भी आप देखो ऐसे कैंडल फॉर्म हो रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे, फिर से ऊपर जाया, इतना ऊपर आया, फिर से नीचे, देन अगेन अप, अप अगेन डाउन, अगेन इट्स गोइंग अप. तो यहाँ पर पूरा रेंज हो रहा है ड्यू टू दिस एरिया, ड्यू टू दिस सप्लाई एरिया. यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर नीचे कर रहा है. हम लोग नीचे से करेंगे ट्रेड, यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे. तो ये वाला भी फ्रेश रिट्रेस एरिया, ये वाला फ्रेश रिट्रेस एरिया से मार्केट मूव हो चुका है. नेक्स्ट रिट्रेस एरिया है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से रिट्रेस होना चाहिए. आप लोग बताओ, आप लोग क्या देख रहे हो, एंड व्हाट्स योर थॉट. ठीक है, जस्ट टेल मी. ओके, रेंज हो रहा है इसीलिए हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले रहे. आप लोग बताओ, आप लोग क्या ट्रेड ले रहे हो, आप लोग का क्या व्यू है, शेयर मी. एंड आप लोग आपका एनालिसिस आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो. ठीक है, टेलीग्राम लिंक इन बायो. आपको लग रहा है कोई एनालिसिस है तो आप लोग शेयर दैट एनालिसिस टू मी इन आवर टेलीग्राम. ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना भी कुछ मोमेंटम नहीं है. धीरे धीरे करके देखो, 30 मिनट पे भी मैं देख रहा हूँ तो ऐसे रेंज हो रहा है, 1 घंटे पे भी ऐसे रेंज हो रहा है. कोई मूवमेंट नहीं है, कोई रेंज नहीं है, ऐसे घूम रहा है. तो भाई हम लोग नहीं ले सकते, राइट, कोई ट्रेड. चेक इट आउट. और बताओ आप लोग क्या देख रहे हो एंड क्या व्यू है आप लोग का.
से इट लाउड गाइस। आप लोग बताओ, आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा 30 मिनट 1 घंटे पे रेंज हो रहा है। आप लोग कोई ट्रेड पे हो कि नहीं ये बता सकते हो, एंड आप लोग का कोई व्यू है तो बता सकते हो, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कोई व्यू नहीं है मेरे पास। बट व्हाट आई कैन से कि भाई यहाँ तक तो भाई मार्केट को आना चाहिए प्रीवियस डे हाई को, ड्यू टू दी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है। यहाँ पर इतना भी कुछ डिमांड जोन इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है। एंड ये कब आएगा, ये नीचे कब जाएगा, आप 15 मिनट पे भी चले जाओ, ठीक है। 15 मिनट पे व्हेन यू मिनिमाइज एंड लाइक कैंडल को नहीं, वीक को नहीं, आई मीन इफ यू जस्ट टारगेट द कैंडल, तो कैंडल को टारगेट करोगे तो भाई मैक्सिमम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ही एक लाइन बन रहा है, ट्रेन लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कैंडल्स क्लोजिंग है एंड ओपनिंग है, बट आई डेंट मार्क द वीक। विदाउट वीक कैंडल का जो स्पाइक है उसको आप लोग नहीं देखोगे तो कम से कम आपको ए वाला नीचे से आपको एक रिजेक्शन मिलेगा, विच आई कैन सी हियर लाइक 4002 के नीचे। 4002 के नीचे एक आएगा सेलिंग, कम से कम फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा ये वाला जोन, ठीक है। 96 to 95 आपको मिलेगा एज ए प्रॉफिट। यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक सेलिंग आएगा, थोड़ी बहुत बाइंग का रिटर्न्स दिखाएगा, देन उसके बाद यहाँ तक सेलिंग आएगा, ऐसे करके। when will it come, when if it break this trend line, ये वाला ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद ही मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। आप लोग बताओ, आप लोग क्या देख रहे हो। मैंने यहाँ पर 2 ट्रेन लाइन मार्क किया हूँ, ठीक है। 1 ट्रेन लाइन इज ओनली फॉर द बॉडी कैंडल, एंड मैं देख पा रहा हूँ क्या है कि यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, इस सपोर्ट जब ब्रेकआउट करेगा दैट मीन्स ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करेगा। इफ दिस ट्रेन लाइन ब्रेक्स एंड सपोर्ट ब्रेक्स, हम लोग को नेक्स्ट जो ट्रेन लाइन यहाँ पर आ रहा है, दिस इज लाइक व्हाट यू कॉल्ड अ वीक ट्रेन लाइन। यहाँ से ये जो वीक है, आई एम जस्ट मार्किंग ऑल द वीक, ओके। तो आप लोग वीक को टारगेट करोगे तो कम से कम यहाँ तक आ रहा है, तो यू विल गेट अ स्कैल्पिंग प्रॉफिट। यहाँ से 4002 और 3 से आप लोग मान लो 2 से सेल करोगे, 2 से सेल करोगे तो कम से कम आपको मिलेगा व्हाट यू कॉल्ड 50 pips, ओके। 97 मीन्स लाइक 50 pips यू विल गेट अ सेल प्रॉफिट, क्योंकि ये वाला सपोर्ट ब्रेक सपोर्ट से यहाँ तक आ रहा है, तो आप देख सकते हो कम से कम आपको 50 pips मिलेगा।
50 पिप्स मिलने के बाद ड्यू टू दिस ट्रेड लाइन, ठीक है, ये वाला ट्रेड लाइन है, ये वाला सेकेंड ट्रेड लाइन जो है वीक का, ये भी ब्रेकआउट कर दिया, तो नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ पर है? नेक्स्ट डिमांड जोन विथ प्रॉपर रिजेक्शन हम लोग को यहाँ से मिलेगा, प्रीवियस डे हाई से। सो प्रीवियस डे हाई नहीं, प्रीवियस डे लो से आपको मिलेगा नेक्स्ट मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा खासा बायर्स का लिक्विडिटी है। तो इफ इट ब्रेक दिस जोन 1997 तो आप लोग सेल की तरफ जा सकते हो। यू कैन गो सेल फ्रॉम हियर 4003 के बाद ही आप सेल कर सकते हो। 50 पिप्स आपको प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ी बहुत पार्शियल बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको देख पाओगे ये जो वीक है यहाँ पर बायर्स लोग एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से रिटेलर्स बाय करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका 50 पिप्स प्रॉफिट जो भी है ना वो ब्रेक इवन हो जाएगा। इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि इसको आप पार्शियली बुक कर लेना एंड कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना। उसके बाद जब ये वाला ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करेगा, सेकंड ट्रेन लाइन विच इज हियर 39097, ओके, उसके बाद आप लोग एक डिमांड जोन तक आपको 69 टू 70 तक, आपको 70 तक मिनिमम तो मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब 90 टू 70, 90 like 4000, so okay, 4000 to 70, 65, it's like nearly 350 pips you will get as सेल प्रॉफिट, ठीक है, आपको सेल प्रॉफिट मिलेगा व्हेन इट टच दिस एंड ब्रेक दिस जोन, कम से कम यहाँ से। अदरवाइज यू कैन चेक इट आउट, नो मोमेंटम, नो ट्रेड इन दिस मार्केट, साइडवेज पे रेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी, एंड अभी तो कोई ट्रेड नहीं ले रहा, बट द थिंग इज यू कैन सी द एनालिसिस। ऐसे करके रिट्रेस करने दो, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने दो, रिट्रेस करे तो और भी नीचे सेलिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू टेक दिस ट्रेड, ओके। ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम, टेलीग्राम पर ये शेयर करूंगा मैं, एंड ये हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख लो, देख कर बताना आप लोग क्या देख रहे हो। प्रीवियस टाइम ये वाला था, यहाँ से हम लोग बाय किए थे, B2 का बाय फ्रॉम हियर, यू कैन सी दैट ड्यू टू द 1 2 3 एरिया। थोड़ी बहुत रेंज हो रहा है मार्केट, इसलिए मार्केट पे इतना भी कोई मोमेंटम नहीं है। व्हाट वी कैन सी, मार्केट जब ए वाला ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करेगा तभी हम लोग के पास सेलिंग आएगा, यहाँ तक नहीं ब्रेकआउट करते तो भाई हम लोग कैसे रेंज देख पाएंगे? 15 मिनट पे, 30 मिनट, 1 घंटे पे भी देख लो, लास्ट 1 2 3 4 कैंडल फॉर्म हो रहा है, 4 कैंडल पे भी आप देख सकते हो लास्ट 4 आवर्स मार्केट इज फुल रेंज, बिट स्लो मार्केट, क्योंकि आपको पता ही है यूएस सीजन एंड न्यूयॉर्क सीजन पे मार्केट पे वॉल्यूम आएगा ड्यू टू दी फ्राइडे मार्केट गोना बी क्लोज, तो मिड नाइट पर आपको वॉल्यूम मिलेगा मार्केट पे, आपको मोमेंटम मिलेगा वहाँ पर। अभी तो आपको मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि रेंज हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट। एंड आप लोग बताना आप लोग क्या देख रहे हो, आपका क्या वैल्यू है, ठीक है, आपका क्या मोमेंटम, आपका क्या एनालिसिस है, you can share that, you can tell us anything else you guys have, let me know in comment box, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताओ आप लोग क्या देख रहे हो, ठीक है। एंड देखकर मेरे को बताना आप लोग का क्या व्यू है एंड एनालिसिस है। एंड इफ यू वांट गाइस टू डू एनालिसिस फॉर अदर करेंसी, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, कौन सी करेंसी पर हम लोग एनालिस करें, ठीक है। जस्ट टेल मी व्हाट करेंसी शुड बी डू एनालिसिस। What currency should we do analysis next? Write it down in comment box. उस करेंसी पर हम लोग करेंगे ट्रेड एंड हम लोग देखेंगे मार्केट पे क्या हो रहा है।
Any other view, guys? Let me know. Share your thoughts, share your analysis. लास्ट 4 घंटे पे मार्केट रेंज हो रहा है, तो भाई इसीलिए मेरा कोई यहाँ पर व्यू नहीं है, ना है कोई एनालिसिस, बट हाँ 10 मिनट पहले ही मैंने और एक एनालिसिस किया हूँ गोल्ड पे ही, एंड उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, राइट, कि ये बॉडी जो है, बॉडी विथ अ रीसेंट सपोर्ट, ए रीसेंट सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाए तो प्रीवियस का ट्रेड लाइन जो है यहाँ पर है, आपको 50 पिप्स मिलेगा, ठीक है, आपको 50 पिप्स मिलेगा सेलिंग की तरफ, उसके बाद रिट्रेस करके रिजेक्शन मिले तो और भी मिलेगा। पहले भी यहाँ पर रेंज हो रहा था, रेंज ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा मोमेंटम किया है, अभी भी रेंज हो रहे हैं, रेंज ब्रेकआउट हो जाए तो अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिलेगा। लाइन पर भी देखता हूँ तो भाई लाइन का हाई जो भी है स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। चेक इट आउट। ओके, इस बॉडी के ऊपर क्लोज कर दिया तो भाई अच्छा खासा बाइंग की तरफ जा सकता है, एंड यही है रेंज का हाई। इट्स अ वीक बट मोस्ट ऑफ द बॉडी हैज बीन क्लोज्ड बिटवीन दिस एरिया टू हियर, ठीक है, 1 2 3 कैंडल्स gone upside, touch the trend, now it's start to go down here. क्या ही मार्केट मोमेंटम दे रहा है गाइस। कौन सी करेंसी पर एनालिस करूँ बताओ आप लोग, जो जो देख रहे हो आप लोग बताओ। ओ सॉरी, डार्क हो गया क्या, अभी तो आ रहा है। कौन सी करेंसी पर शैल वी डू एनालिसिस नेक्स्ट, फटाफट कमेंट करके बताओ, उस करेंसी पर हम लोग करेंगे एनालिसिस। चलो देखते हैं, राइट इट डाउन गाइस, राइट इट डाउन नेक्स्ट करेंसी। ओके भाई, ऐसे रेंज करता रहे तो भाई हम लोग कैसे ट्रेड करें। एक ही ट्रेड लिए आज सुबह से, फर्स्ट ट्रेड कैप्चर्ड 100 पिप्स। ऐसे नहीं कि भाई मार्केट बार बार आया, इवन एसिड हिट हो गया, हमारा एसिड भी छोटा है, एक ही ट्रेड लिया है, ठीक है, नॉट लाइक अदर्स कि भाई ट्रेड देने के बाद ऑपोजिट गया तो उसको भी हम लोग पिप्स की तरफ कैलकुलेट करेंगे। हमारे जहाँ से एंट्री है उस एंट्री से ही 140 पिप्स ऑलरेडी चला गया है मार्केट, बट मैंने 100 पिप्स पर मैंने कैप्चर कर चुका हूँ, एंड 100 पिप्स का जो कैप्चर है वो मैंने टेलीग्राम पर मेंशन किया हूँ। तो इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, एक बार टेलीग्राम पे जाकर चेक करके देखो, रिसेंट पे जो जो एनालिसिस है उसका, ये वाला जो एनालिसिस है कहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्यों जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक पैराग्राफ लिखे हैं, उसको एक बार रीड करके देखना, एंड यू विल अंडरस्टैंड। एंड अदर थिंग्स लाइक अभी तो धीरे धीरे करके मार्केट ब्रेक होने वाला है, वेरी सून वी कैन सी हियर, वेरी सून इट विल ब्रेक दिस जोन।
ये ब्रेकआउट हो जाए तो भाई अच्छा खासा एक सेलिंग मिलेगा, क्योंकि बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट बिकम वीक नाउ, डोंट ट्राई टू टेक अ बाई। यहाँ से एक सेलिंग आएगा अभी। ठीक है।
गोल हैज नो वॉल्यूम एंड द मोमेंटम गाइस, इसके अंदर ही ये देखो कब से टाइमिंग देखो तो टाइमिंग इज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स, बट कोई ना, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर भी देखे तो any thought you guys have, let me know. It's doing a quite range here, right? हमारा एनालिसिस जो भी है यहाँ पर, एक तो एनालिसिस है कि यहाँ तक आए, प्रीवियस डे हाई आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करता है तो हम लोग सेलिंग पे जाएंगे। इफ इट ब्रेक दिस प्रीवियस डे हाई देन वी विल गो फॉर मोर बाई, ठीक है। एंड इस सेम जोन से ही मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, देखो 50 पिप्स चला भी गया, 3 to 8, 50 पिप्स विद इन फ्यू मिनट, ओके। 5 मिनट पे मार्केट मूव हो चुका है, ना रिजेक्शन नो रिट्रेसमेंट, सीधा भाग गया। Seems like it will go buy more. Okay. आपको मोमेंटम तो आ जा ना, फेयर वाली गैप है ना, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ कि भाई रिट्रेस करे तो सीधा बाई करेंगे, नथिंग इज हियर, सीधा भाग रहा है। लेकिन बार बार एक ही जोन से मार्केट मूव हो रहा है, वी कैन डोंट एक्सपेक्ट कि भाई बार बार बाई करूँ उस जोन से, इसलिए मैंने बाई नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ से मार्केट रिजेक्शन मिले। यहाँ पर इतना भी कुछ नहीं है, इफ इट फॉर्म्ड अ वंस फेयर वाली गैप तो भाई हम लोग मार्किंग करके वहाँ से एक बाय ले लेते, देयर इज नो फेयर वाली गैप हियर। एंड अभी रीसेंट हाई ये है, रीसेंट लो ये है, फीवो रिट्रेस कुछ आएगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। फीवो रिट्रेस पर ही है 0.5 एंड 0.6, तो थोड़ी बहुत सेलिंग आएगा मार्केट यहाँ से ये, ठीक है, थोड़ी बहुत सेलिंग आएगा, कम से कम फिर से 30 पिप्स।
धीरे धीरे सेलिंग आ रहा है, यहाँ तक आएगा क्योंकि ये फीवर रिट्रेस है। एक्सेप्ट दैट तो भाई अभी कुछ भी नहीं है मार्केट पे, सीधे सीधे जा रहा है मार्केट, कोई भी डायरेक्शन। 10 पिप्स का मूव आया। बोर हो चुका है। टेक इट आउट। कर रहे हैं हम।
आप लोग का कोई व्यू है तो बताना मेरे को, क्योंकि ये वाला जोन मैं वेट करो ब्रेकआउट के लिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ब्रेकआउट 4002। इफ इट ब्रेक्स, my next will be a 50 pips of scalp up to here. But the thing is, market is doing a quite range here. If you look at the all the time frame, like 15 minute, what you see here, it's doing a range. Market is buying from here, sell is from here. Quite doing a range, right? In 30 minute, if you go to the long time frame, you will see that here 30 minute, how many candle? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candle, which is 4.5 hours pass. And if you calculate like 4 hours, right, 4 hours pass, but the market is in a sideways. Let's go to the 1 hour candle. You can check it out, like 1 2 3 fourth candle is this, so that means already 3 hours pass, 3.5 hours, and here it will be a half hours. Okay, so almost 4 hours pass, market is in a range. What we can see clearly in 30 minutes, that market quietly doing a range in between here to here, right? So right now we can't take any trade while it's doing a range, but we can mark the range, isn't it? So you can mark the range of here to here. When the range gonna break in downside, you can see here there is a one more trail line here, and from here to here it's a 50 pips of scalp. And if it break this trail line, then you will get up to 300 pips overall, and my target will be 3970. The reason you will find out, that is the demand with a POI, point of interest, and यहाँ से retraced हो सकता है market, and this is our previous day low. So if it break this area, then market gonna come and target our previous days low. तो यहाँ तक हम लोग को sell मिलेगा. What if happens if it break this range upside? तो ये range ऊपर की तरफ breakout करता था, already ये वाला tap हो चुका है ये वाला line से. Then what will happen, यहाँ से यहाँ तक market जाएगा 4020 to target the previous day high. Already ये same trade 140 pips चल रहा है, ठीक है, मैंने 100 पिप्स बुक कर लिया, क्योंकि ये वाला रेंज हो रहा है. रेंज पे हम लोग ऐसे नहीं कि सेम ट्रेड दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन भी हिट नहीं हुआ, ठीक है. तो कंटिन्यूस ट्रेड पे देखे तो 140 पिप्स चला भी गया, लेकिन हम लोग ये वाला ट्रेड लाइव पे लिए थे एंड मेंशन किए थे कि यस यू कैन गो विद अ लो रिस्क, बट मार्केट रिटर्स का तो और भी रिस्क ले सकते हो. ये मैंने बताया. ये वाला ट्रेड मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हूँ, आप लोग जाओ टेलीग्राम पर, पूरा एनालिसिस है. क्योंकि एलाइट वेव है, ये फिफ्थ रिजेक्शन हम लोग को प्रीवियस हाई मिल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ट्रेल लाइन है, ठीक है. यहाँ पर देखो तो 5 मिनट का यहाँ पर क्या हो रहा था, ये भी एक रेंज हो रहा था. राइट नाउ वी आर लुकिंग एट 30 मिनट्स, सो 30 मिनट यू कैन सी दैट 5 6 कैंडल्स आर हियर, इट वाज डूइंग अ रेंज. 5 मिनट पे आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपरली एक रेंज हो रहा था, रेंज ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ. तो straight was, it's a buy trade. And by looking at the trend, market is making a breakout structure. Okay, small change of character, breakout structure, ठीक है. तो और भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते करते मार्केट को ऊपर जाना चाहिए. हम लोग कहाँ से सेल करेंगे, एक तो ये वाला रेंज ब्रेकआउट से सेल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से सेल कर सकते हो 98. ओके, 98 और 99 विल बी सेफ टू टेक अ सेल. सो ये मेरा व्यू है गोल्ड पे. आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ. ओके, और यू कैन टेल मी इन टेलीग्राम, यू कैन शेयर योर एनालिसिस लाइक दैट, ठीक है. आप लोग आपका एनालिसिस टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो. एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक एंड टेल मी, ठीक है. दूसरी करेंसी पर आप लोग देखना चाहते हो, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप लोग कौन सी करेंसी पर देखना चाहते हो. व्हाट करेंसी यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू टेक ट्रेड, and what currency you guys are really interested to see the analysis. Tell me in comment box so that we can do the analysis and take trade. ठीक है, हम लोग एनालिस करेंगे दूसरी करेंसी पर, क्योंकि ये 30 मिनट पर भी देख सकते हो कि भाई मार्केट पूरा रेंज हो रहा है. नो मोर ट्रेड इन गोल्ड फॉर नाउ, बट आप लोग देख सकते हो हमारा बाइंग है. बाइंग कट कर देना जब ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ब्रेक इवन पे नीचे 20 पिप्स क्लोज हो जाए तो भाई सीधा सेल करना 970 तक, मतलब 4000 से 70, मतलब 300 pips. If you don't get 300 pips, at least you will get a 250 pips. Okay, at least you will get a 250 pips. So 250 pips आने के बाद आप लोग देख पाओगे यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट मिलने के बाद इट विल डू अ बुलिश मूव. इसके लिए गोल्ड पे कोई ट्रेड नहीं है. आप लोग बताओ, आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे, एंड आप लोग का क्या एनालिसिस है, क्या व्यू है.
You can share with me and you can share with our Telegram. ठीक है? और कौन सी करेंसी पर देखूं ये बताओ. Tell me what currency should we do analysis. Anyone? Okay, if you are new to our channel, do like our stream and guys subscribe that. बेल आइकन ऑन कर रखो क्योंकि इसी तरह एनालिसिस इसी तरह ट्रेड आपको मिलेगा. आज हम लोग एक ही ट्रेड लिए हैं, एक ट्रेड कैप्चर किए, वो भी 100 पिप्स. अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला ड्यू टू द रेंज. ठीक है. एंड बाकी आप लोग कल भी देख सकते हो, कल हमारा स्ट्रीम देखो. इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल जस्ट चेक आउट आवर यस्टरडे स्ट्रीम. Do rewind and check it out. You will see that we captured to what you call 250 pips we have captured. Okay, then after 250 pips we captured 80 pips, 46 pips. These are the some captures yesterday's trade. Check it out. अभी देख पा रहा हो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है. इफ इट ब्रेक दिस डाउन यू कैन गो फॉर दिस सेल. ठीक है, कैंडल क्लोज होने दो 5 मिनट पे, देन यू कैन गो फॉर सेल. अभी भी कितना मिनट बाकी है? 1 मिनट मोर टू क्लोज कैंडल. ठीक है, 1 मिनट कैंडल क्लोज हो जाए तो सेलिंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं. I will also try to do an analysis and check it out. And share your thoughts, share your analysis, guys. It seems like it will break now. What currency should we check? Tell me in comment box.
मार्केट पूरा रेंज हो रहा है गाइस, इसके अंदर ही मार्केट घूम रहा है। 5 मिनट पे देख लो, 15 मिनट पे देख लो, यहाँ पर ही मार्केट है। इसके अंदर ही देख लो, 30 मिनट पे भी यहाँ पर मार्केट घूम रहा है। क्या ही बोलूँगा इस, वेट फॉर द न्यू सेटअप, ठीक है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट ना करे तब तक तो भाई कोई ट्रेड नहीं है। आप लोग कोई ट्रेड लियो कि बताना मेरे को, क्योंकि अभी तो रेंज हो रहा है ना, इसलिए मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। बट सेटअप ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट, रेंज ब्रेकआउट यू कैन टेक ट्रेड। आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे, बताओ मेरे को। यू गाइस सी एनी ट्रेड, यू गाइस सी एनी जोन फॉर नेक्स्ट सेटअप?
So guys, let me know what you guys see in gold, और if you guys want me to do analysis in other currency, let me know in comment box आप लोग क्या देख रहे हो, कमेंट बॉक्स पे बताना। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ये वाला 10 के ऊपर ब्रेकआउट करे तो भाई सीधा बाय की तरफ और भी जाएगा अच्छा खासा। ओके, और इफ इट डजंट ब्रेक दिस, देन वी विल गेट अ सेल अप टू हियर द प्रीवियस डे लो तक। So it's very important us to wait and see that candle closing and the range breakout. If it does, then I can go for the trade. So okay, should we do analysis for other currency? Let me know in comment box. आप लोग चाहते हो दूसरी करेंसी पर ट्रेड करें, दूसरी करेंसी पर एनालिसिस करें? इफ यस, डू लाइक एंड से इन कमेंट बॉक्स कि हाँ, तो हम लोग करेंगे उस करेंसी पर एनालिसिस। आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? लेट मी नो। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे दूसरी करेंसी, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं गोल्ड बाई की तरफ जाना जब ये 10 के ऊपर ब्रेकआउट करता है। ओके, मार्क द जोन, कीप एन आई ऑन चार्ट, क्योंकि मैं दूसरी करेंसी पर एनालिसिस करने जा रहा हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कीप एन आई, जब ये रेंज ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, यू कैन गो फॉर बाय आफ्टर द कैंडल क्लोज, यहाँ से यहाँ तक। और इफ इट क्लोज अ कैंडल बिलो दिस रेंज, तो आपको 50 पिप्स स्कैल्प मिलेगा। उसके बाद इफ इट ब्रेक्स, यू विल गेट अ सेल प्रॉफिट अप टू हियर। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि भाई स्पाइक मारा, यू कैन सी दैट इट डिड अ स्पाइक, उसके बाद क्या हुआ, सीधा फॉल किया यहाँ तक। सो वेट फॉर द कैंडल क्लोज इन 5 मिनट। नेक्स्ट, let's go to the other currency, just the way we will see Ethereum, which I took a trade. Ethereum, it's like, you can check it out, it was in a order block, market tap in order block. What it did happen, सीधा भाई ऊपर चला गया यहाँ तक in Ethereum. From here to here, it given us a कम से कम 70 to 80 pips. Okay, 70 pips, you can calculate 75 pips, and this was the a perfect entry for taking in a buy side. Right now what we can see here, it was a support with the order block with the demand यहाँ पर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, then did a retrace with a bullish candle. But what you can see here, sellers are being strong here. I've been mentioning you from here, sellers are being strong here. तो इस पे क्या कर रहा है, बुलिश तो आया एक दिन, उसके बाद क्या कर रहा है, अभी मार्केट अभी बियरिश पे जा रहा है, बियरिश पे जा रहा है, एंड इट्स लाइक गॉट अ रिट्रेस, रिजेक्शन, सेल, एंड हाउ मच कैन वी गेट अ सेल, ये वाला लो से हमारा सेल चल रहा है, यहाँ से नेक्स्ट डिमांड, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, इसको देखना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला कैंडल जो है 1 डे का मैं देख रहा हूँ, 1 डे वी हैव अ फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक with no single candle tap here, no mitigated, we have a efficiency gap here. बहुत बार मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर भी छोटा छोटा ब्रेकअप स्ट्रक्चर या स्मॉल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इट्स अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जब यहाँ पर आएगा, वी विल गेट अ प्रॉपर बाइंग मार्केट।
तो हम लोग का क्या टारगेट रहेगा कि बाइंग जो सेलिंग जो चल रहा है हमारा, वो कम से कम यहाँ तक सेलिंग आए, then after that we will go for buy from this area. Note it down. You can take a buy from this area. If you get a rejection मिले तभी ट्रेड लो, वो भी लो रिस्क पर, क्योंकि हर जोन आपको मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए. जैसे ये वाला जोन ब्रेकआउट करके नीचे आ गया तो यू विल फाइंड अ नेक्स्ट जोन हियर. So you can play in every zone, or if you get a confirmation in every zone, you can play. But when it comes to a zone without any confirmation, don't take trade. Okay. So you have a next zone here. You have a next zone here. So every zone you can see the small quantity of gap. But in this small quantity, you can see it's nearly 100 pips, 1.7 to 1.8. That means 1700 to 1800. It's a 100 pips and above. Right now what we are looking at is Ethereum ETH in a 1 day chart. We got a rejection, we got a retrace, now it needs to fall. So I took a sell trade. Right now you can see it's not even a big movement. ठीक है, यहाँ से ही सेल है. सेलिंग का थोड़ी बहुत एसल तो भाई बड़ा ही है. ठीक है, क्योंकि मैं इसको स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, एंड वहां तक मेरा एसएल भी मेरा 5 मिनट के कैंडल क्लोज. ठीक है, 5 मिनट के कैंडल क्लोज हो जाए तो आई विल कम आउट फ्रॉम द मार्केट. दिस इज अवर इथेरियम ट्रेड. लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स व्हाट यू सी, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर व्यू. इसी तरह हम लोग इथेरियम पर ट्रेड ले सकते हो. ठीक है, अभी भी देख सकते हो. एंड अब बताओ, इफ यू रियली गाइस लर्निंग समथिंग, देन आई होप एक लाइक डिजर्व. ठीक है, so you can check it out and see here. Okay, so bit I think Ethereum is clear to you.
right? So Ethereum, it's clear for you that why we are in a sale. Reason, the market break this previous order block with a demand zone. It came and did a retrace after got a rejection. Now it going for the sale side. सेल कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा, ठीक है? ये मेरा व्यू है. And other currency, let me know if I want to do other currency analysis. आप लोग बताओ अदर करेंसी पर हम लोग एनालिसिस करें कि नहीं. चलो करते हैं बिटकॉइन पर. इथेरियम के बाद बिटकॉइन, दो क्रिप्टो कॉइन है, दोनों इजी मूवमेंट दिखा रहे कि भाई ये भी सेलिंग आएगा. सेलिंग आएगा, कम से कम आपको यहाँ तक आएगा 102 पॉइंट, मतलब ज़्यादा नहीं, 20 पिप्स आएगा और, ठीक है? आपको बिटकॉइन पे 20 पिप्स आएगा. 20 पिप्स के बाद रिट्रेस रिजेक्शन मिले तो आपको और भी मिलेगा. मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ. लेट्स गो टू दी 4 आवर्स. जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपको क्लियरिटी मिलेगा. ओके, आई एम लुकिंग रॉन्ग ब्रो. मार्केट तो भाई फिर से 98 तक आने का चांसेस है बिटकॉइन पर. बट हाँ, वो रिट्रेस कर रहे कि नहीं वो भी देखना चाहिए. ओके, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 0.5 0.6 पे रिट्रेस नहीं किया तो 0.7 पे करने का चांसेस 25% है. लेकिन you know that if there is a chance, it works. You know it is a 1% of chance, right? तो ये हुआ अभी मार्केट पे. अभी ये डिमांड जोन है 20 पिप्स का, ठीक है? प्रॉफिट मिलेगा इफ यू टेक अ सेल ट्रेड. आफ्टर दैट यहाँ से जब 5 मिनट का कैंडल लिक्विडिटी स्वीप होने दो, उसके बाद एंट्री करना, ठीक है? यू गाइस कैन सी हियर, मैंने तो पूरा ओवर नीचे रख दिया, बट यहाँ से रिजेक्ट मिलेगा तुमको, ठीक है? यहाँ से तुमको रिजेक्शन मिलेगा, बट डायरेक्टली एंट्री मत करना. आप लोग देखो 5 मिनट का कैंडल बुलिश फॉर्म होने दो, उसके बाद एंट्री करना. 30 मिनट पर भी मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से एटलीस्ट डिमेंशन इतना तो होता है, ठीक है? मैंने ही छोटा मार्किंग किया हो. इफ़ यू मार्क द डिमांड जोन, एटलीस्ट इट विल बी लाइक 5 to 10 पिप्स का डिमांड जोन होता है. तो उसके बाद 15 पिप्स पे 15 मिनट पर भी देखूँ तो ये जो है ये इसको हम लोग डिमांड बोलते हैं. आई थिंक कैन यू सी, या यू कैन सी दैट, ठीक है? ये वाला जोन को हम लोग डिमांड बोलते हैं. मार्केट अभी डिमांड पर आ गया 3 से 2. इसको स्वीप करने के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है आफ्टर रिट्रेस और रिजेक्शन, तभी बाय करना, ठीक है? सो लेट द मार्केट डू द स्वीप. उसके बाद एक कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म होने दो. इफ इट फॉर्म ए हैमर और डोजी कैंडल, देन कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री करना, ठीक है? रिट्रेस करने के बाद आई मीन लाइक इसको लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट एक 5 मिनट पे कैंडल फॉर्म होना चाहिए, एक हैमर होना चाहिए, नहीं तो एक डोजी कैंडल होना चाहिए. दोनों ही नहीं होता है तो आप लोग कैंडल क्लोजिंग पर वेट करके छोटा सा रिस्क लो. 0.01 और 0.02 आपका रिगार्डिंग इक्विटी पर आप लोग लॉट साइज मान लो. आप 0.10 पे ट्रेड करते तो 0.02 पे लो. इफ़ यू मेक इट्स ओके, इफ इट डजंट you will lose your 0.02 lot size with a $5 or $6. That's it. Okay, not even 10 pips, ठीक है? तो इसी तरह आप रिस्क कैलकुलेशन कर सकते हो. एंड इफ इट फॉर्म देन आप लोग यहाँ से एक बाय ले सकते हो बिटकॉइन पर. ये है BTC USD एंड यहाँ तक. बट मेरे को नहीं लगता कि इसको यहाँ पर पाई जाएगा. रीज़न क्या है? इथेरियम अभी क्या हो रहा है? सेलिंग पे फॉल हो रहा है. एंड उसको फॉलो करके बिटकॉइन पे भी एक सेलिंग हो सकता है, ठीक है? तो क्योंकि दोनों और क्रिप्टो चेन, ओके क्रिप्टो है, एक ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी अ बिटकॉइन फॉल अप टू हियर 99. मैं बोल, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, उसके बाद ही मैं बोलूँगा, ठीक है? कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं है. आफ्टर द कैंडल क्लोज, मान लो कि भाई लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं किया, नीचे की तरफ क्लोज किया, तो आपको मिलेगा सेलिंग. सेलिंग कहाँ तक मिलेगा? फिर से नेक्स्ट डिमेंशन जो है यहाँ पर है
तो इसके नीचे से आप लोग सेल कर सकते हो 100 से 99, 100 पिप्स आपको सेलिंग मिलेगा। 100 पिप्स तक टारगेट रखना, बट 80-90 पिप्स पर आप बुक कर लो एंड बाकी ट्रेलिंग करके रख देना। ठीक है, सो यही मैं बोलूँगा। लिक्विडिटी स्विप करके 5 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म करता है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसका क्लोज कर चुका है, नीचे की तरफ हंट किया है। नाउ जस्ट वेट फॉर द कैंडल क्लोज। ऊपर की तरफ क्लोज करता है बाई की तरफ चले जाना, नीचे की तरफ क्लोज करते तो भाई सेलिंग है। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द कैंडल क्लोज देन एंटर इन अ ट्रेड, एंड दिस इज आवर BTC USD ट्रेड। आई विल रिमूव दिस ट्रेड। ओके, एंड अभी भी 15 मिनट पे कैंडल क्लोज होने पे हाउ मच टाइम डू वी हैव? BTC पर 15 मिनट कैंडल क्लोज is still we have a 1 minute more. Still we have a 1 minute more. After 1 minute, if candle close below, then go for this sell. ठीक है, मैक्सिमम एसएल 100.5, 5 to 6, 40-50 पिप्स का आपको एसएल बनेगा मैक्सिमम। एंड गोल्ड अभी नीचे आ रहा है तो देख लेना, रेंज ब्रेकआउट हो जाए तो भाई सेलिंग की तरफ रेडी रहना। ठीक है, ready for that, let's go। We are already entered guys, we are in a peak of entered। लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ मैं। Does it close the 5 minute candle? 5 मिनट का तो कैंडल क्लोज हो चुका है। ठीक है, अभी देखना है कि भाई यहाँ पर जब मार्केट आएगा यू कैन गो फॉर दिस सेल। इस जोन पर 1 मिनट का कैंडल इफ इट फॉर्म्स यू कैन गो फॉर दिस सेल। मैं देख रहा हूँ एक सेल लेने के लिए। फिफ्टी पिप्स आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, यू गॉट ए इंस्टेंट सेल। ओके, चेक इट आउट। सीधा इंस्टेंट सेल मिला है आप लोग को। कितना पिप्स का सेल हुआ है? 35 पिप्स। आप लोग अभी तक एंट्री नहीं किए तो 0.04.6, 0.6 से आप लोग एंट्री कर सकते हैं 0.6 पर। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट का भी जोन वहाँ पर ही बन रहा है, फेयर वैली गैप। तो आप लोग फिर से एंट्री नहीं किए तो आप लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हो।
इफ यू हैव टेकन दिस फॉलोइंग ट्रेड देन यू वुड हैव गॉट अ 35 पिप्स। फिर से आप लोग एंट्री करना चाहते हो तो वही जोन वहाँ पर ही है, आप लोग देखो, उसके बाद आप लोग एंट्री कर सकते हो। यू कैन टेक फ्रॉम हियर, बट 5 मिनट पे भी हम लोग जोन देख लेते हैं, जा रहे हैं ऊपर की तरफ, लेट इट गो। ओके, ही डिड रेस्पेक्ट 1 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, बट रेंज पे ही सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ओके, 50 विप्स का जो स्कैल्प था वही आया था, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव हो गया। प्लानिंग टू टेक दिस ट्रेड बट नॉट गिविंग अस प्रॉपरली।
ओके विल इट हिट टीपी कितने में चार्ट देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ अभी 1 मिनट का मैं चैट देख रहा हूँ, ठीक है। मैं तो भाई सेलिंग पे हूँ अभी भी। ये तो भाई सिर्फ स्पाइक मारा। मैं 99.5 पर टीपी रखा हूँ। 4000 तक आया था। यहाँ तक टीपी 99.5। चल तो रही है। Okay, will it hit 4010 again? I do. Okay, 4010. It's hard, brother, to hit. Might be hit, but due to the range was breaking a downside and did a retrace, it need to go below. Okay, that's my view. Market break this range and यहाँ से market फिर से retrace कर चुका है भाई. Not good idea. Are you guys in a sell or buy? If you ask me, still market is in a sell side. ठीक है. Big sellers are there. They will push the market downside. 99.5 my target is there. দিচ্ছি। আরে
Okay, so as I mentioned you that my target is in a 99.5. Huh? So I took this trade and it gone 100 pips, guys. I took a trade from here 07 से मैंने लिया था ट्रेड, ठीक है, ऊपर से मैंने लिया था because I knew that it will break downside and ऑलरेडी ब्रेकआउट किया है तो और भी नीचे जाएगा, इट विल गो डाउन साइड, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लिया था एंड इट गॉन वेरी वेल, चेक इट आउट, 100 पिप्स ऑलरेडी हो चुका है। 7 से मैंने लिया था, 7 से 97, ओके। Did you guys take this trade? Yes, no? If you guys taken, I hope that means you booked some of your profit. More is coming. তুলে যাচ্ছে আমি এখনো। हाँ, 23 একটা তুলে নিয়েছি আমি, এটাই আমি কয়েকটা বেশ 96 আমার যে তোলা হয়ে গেছে আমার, 91 তোলা হয়ে গেছে তো, দেখে একবার। আর 95.7 তোলা আছে আমার কাছে। ফরওয়ার্ড করে দেবো। কত দেখছিস?
115 pips, 23 গেছে। আমি এই পোস্টটা দিচ্ছি। In comment box who has taken this sell trade, and in our telegram I just mentioned you that if this range break, go for the sell trade. I mean, go to the continuous trend. The continuous trend was bearish. If you have taken, you would have made a good profit in it. So this is what happens when you follow the concept and take the trade. We took this trade and made a profit. Check it out, and still more to go. ये कम से कम और भी नीचे जाएगा. मेरा व्यू है कि ये और अच्छा खासा सेल जाएगा ये, ठीक है. Check it out. यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है. It will be a waterfall.
এখন দিচ্ছিস? দিচ্ছি স্যার। কেননা আমি কয়েকটা যেটা অ্যানালিস দিচ্ছি ওই অ্যানালিসিসটাও ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। দিচ্ছে। হুম। Okay, you guys are missing out many trades and chances. Whatever we take trade here, I do mention in our Telegram. Check out our Telegram. Whatever trade I shared here, that every trade is in our Telegram. So this sell trade which I have mentioned here, I know you might haven't taken this trade properly, but we taken this trade. Okay, we taken this trade. Check it in our Telegram with a proper analysis, and the SL and TP is there. So don't forget to join and make some profit. Okay. Do you guys take in sell or buy? Let me know in comment box. क्या ट्रेड लिए हो, सेल लिए हो या बाय लिए हो, बताना मेरे को. देखिए
Okay, I hope you guys haven't joined our Telegram. So you guys are missing out many chances cause right now just check it out our Telegram. If you're new to our channel, just check it out and see what we have done, what are the analysis we have given here. You can see the trade, the sell trade and all. This trade has been given to our premium group. This buy trade has been given to our premium group. This sell trade has given to our premium group with analysis with a reasonable, okay, not only just sharing the entry and exit. We tell the reasonable trade, okay, and what is the zone, exit, target. So all these things are there, and you will get the course of the PDF, okay, all these things are there. And if you guys don't want to join, you can check it out in our live stream performance, okay, morning itself with a proper analysis. Look at this with the previous day low and previous day high. Okay, so we made 100 pips, just I captured, but it gone more than 100 pips, 140 pips we got. Then after we took this sale, I just mentioned you in a long time frame like 30-minute, 15-minute. If you just go and you will find out that market is doing a quite range here. Look at this. Okay, market was doing a quite range here. After the range breakout in 5 minutes, market straightly fall. And how much it can fall? If you ask me, my target is the previous day low. I always keep a big target with a small SL and TP, and I shared this trade here also. You can see that, and yes, it hit our SL with a spike. But as I mentioned, you always cut your trade after the candle close. Okay, so you can see that order block was there, fair value gap is there. That is the reason of this sale trade from here. And I kept mentioning you that you can cut your trade after the candle close. You can see that 1 minute candle closed, did a spike and closed below after instant fall. You can see that. And not only that, if we see this trade has been given to our premium group with a properly analysis with the SL and TP is there, so that you don't miss where to cut your trade or where to book your profit. So everything is there, everything is mentioned there in our premium group. So don't forget to join and check it out. Okay, check it out and do like our stream, guys. Those who are watching, I hope many of you haven't liked our stream. Do like our stream so that you get a recommendation and let your friends also learn, right? Let your friends also see and join our channel, because if you see still it's a selling for me. Because if you see market break the range, it did one time retrace and it has a potential to do second time also. ठीक है, अभी भी और एक बार मार्केट रिट्रेस कर सकता है. ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चले जाओ लाइक 15 मिनट पे और समथिंग्स, यू विल फाइंड आउट कि ये जो रेंज हुआ था, रेंज पर मार्केट फिर से आया है. एंड मैक्सिमम ये देखो, ये था रेंज, राइट. मार्केट टैप इन दिस रेंज लॉन्ग टाइम फ्रेम. जैसा वे मैंने मेंशन किया कि भाई मार्केट कम से कम तुमको 50-60 पिप्स देगा, उसके बाद रिट्रेस करेगा. Retrace, if you get a 5 minute rejection, you will get a sale up to this demand with a point of interest, whatever you want. You can call this area. You will get a previous day low, your target. Yes, and where is your ASL? If you ask me, you can keep your ASL this candle week. Okay, so like 2 to 7, it's gonna be not 2, like it's almost 3. So 3 to 7 or 8, that means it's your will be your 50 pips of ASL, but better enter with low risk. Okay, and check it out. All this analysis, all this trade has been shared in our Telegram, so don't forget to join, otherwise you're gonna miss out. Okay, if you don't want to miss out, then better join fast. And if you have any other doubt and question, you can ask me and you can share me your analysis through in our Telegram. Telegram is free to join. So join our Telegram. Okay, it's free. You don't have to pay any single currency. Okay, just join and let me know in comment box. Have you joined our Telegram? Have you liked our stream? If it's so, then you can make some profit with me. And not only this, and you can see that it's running a $40. That means slowly Ethereum is moving downside. इसका एनालिसिस भी मैंने शेयर किया हूँ, ये देख सकते हो, लाइव पे भी ट्रेड लिया हूँ, आप देख सकते हो. आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ सेल. ठीक है, so I don't think I have to explain you if you're really a ESFC trader or
ICT trader, you know that after the order block or demands on break, market did a retrace, and when it get a rejection, it fall, and next demand तक market fall हो सकता है, गिर सकता है, and this is what happens. ठीक है. एंड ये था मेरा इथेरियम. इथेरियम गिर रहा है मतलब बीटीसी भी गिर रहा है. बीटीसी भी मैंने सेल बोला हूँ. ठीक है कि if it close a candle, okay, right now what we can see, if it open a candle above this, then only we will go for the buy. If it doesn't, then it will be in a sell market. Where is our gold? गोल्ड पे देखो रिजेक्शन मिला है कि नहीं. टेल मी, आप लोग को रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं. छोटा कैंडल पे देखोगे 5 मिनट पे और 1 मिनट पे, यू विल सी यू गॉट अ रिजेक्शन. चेक इट आउट. 3 to 1, ओके, 20 पिप्स. सीधा आपको 20 पिप्स मिल गया. अभी सेलिंग करते ही आपको 17 18 नहीं, देखो 19 to 20 पिप्स आपको मिल रहा है. तो ये तो नीचे जाएगा, नीचे जाना चाहिए. एक बार इसको कैंडल को क्लोजिंग होने दो और भी अच्छा खासा नीचे जाएगा. ठीक है. और आप लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू कांट वॉच आवर लाइव स्ट्रीम, तो मैं बेटर सजेस्ट करूँगा आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करो. ठीक है. एंड वहाँ पर मैं एंट्री एग्जिट ऑल द टीपी टारगेट मैं दे दूँगा. आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. सो जस्ट ज्वाइन, क्लिक द अकाउंट एंड यू विल गेट टू नो. एक रिजेक्शन तो भाई अभी आना चाहिए. ठीक है, रिजेक्शन आना चाहिए. लेट मी नो गाइस, लेट मी नो.
अभी भी सेलिंग पर ही है। रीजन क्या है देखोगे तो ये जो डिमांड है, डिमांड ये रेंज जो है, रेंज ब्रेकआउट किया है, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। सेम अभी देखो तो रीजन हाई ये है, रीजन लो है, यहाँ पर 0.5 का रिट्रेस जोन है फिबोनाची का। तो आप लोग फिबोनाची यूज करते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ से एक रिजेक्शन आप लोग को मिल सकता है। इफ़ यू गाइस आर प्लानिंग फॉर टेकिंग बाय साइड, आई वोंट सजेस्ट कि भाई आप लोग बाय करो, बट आई विल सजेस्ट कि भाई आप लोग सेल कर सकते हो। क्योंकि डिमांड जोन पर, डिमांड नहीं, यहाँ पर रेंज जो हो रहा है, रेंज पर रिट्रेस कर रहा है, वो तो फिबो रिट्रेस है। एक कैंडल 5 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, आप बाहर आ सकते हो, नहीं तो यहाँ से एक सेलिंग फिर से आपको मिल सकता है। मैक्सिमम आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि भाई यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, 7 तक 30-40 पिप्स का। उसके बाद आप लोग होल्ड मत करो एंड यू कैन कम आउट फ्रॉम द ट्रेड। यहाँ से एक तो रिजेक्शन आना चाहिए ड्यू टू द रेंज छूता फिबो रिट्रेस से। ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंस है कि भाई कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग पे आप लोग ध्यान दो। If it close above this, then come out from the trade, or if it doesn't close, then you can stay in a trade. ठीक है, तो बात चला है।
गाइस आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे? व्हाट यू सीइंग इन गोल्ड? सबको तो भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग ट्रेडिंग का स्टाइल है। आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे मेरे को बताना। मेरा तो भाई जितना मैं देख रहा हूँ कि रेंज नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। सो इफ इट ब्रेक दिस बिलो, देन आवर व्यू रहेगा सेलिंग की साइड। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स व्हाट यू गाइस सी इन गोल्ड। आप लोग क्या देख रहे हो गोल्ड पे मेरे को बताना। एंड वन मोर थिंग्स जस्ट बिफोर वी गो टू द अदर करेंसी, हमारा इथेरियम ट्रेड जो दिखाया आप लोग को, जो ट्रेड हम लोग ले रहे थे सबका सामने, ये वाला देख सकते हो। धीरे धीरे करके मार्केट मूव हो रहा है। यू कैन सी दैट प्रॉफिट इज कमिंग after you entered, and SLTP is there mentioned you here. All these things are done in live stream. Clearly I have taught all these things. And if Ethereum falls, then Bitcoin also will fall. I have mentioned that. Let us check the Bitcoin. Okay, Bitcoin started to fall. That's great. So we didn't enter in trade, but we can see that there is a reason of going sell side. Okay, market break this demand, did a retrace, but it couldn't form a green candle above. Before it formed a green candle, you can see here it made a fair value gap. In this fair value gap, market started to fall. And how much will it fall? I'll remove this one because it didn't work for us. So we will get a sell up to here. यहाँ से यहाँ तक हम लोग को सेलिंग मिलेगा, ठीक है, from here to here. Check it out and tell me in comment box what you see in BTC. If BTC falls, then Ethereum falls. If Ethereum falls, then BTC falls. Both are works like 60 to 70% is same, but the volume is different. Okay, sometimes if you see Bitcoin has fall huge, but Ethereum fall like here to here, but both works similar. Okay, and if Ethereum, you can see that Ethereum giving us a profit, which I have told you in live stream. Go with a low risk, and your target SLTP all are mentioned here. Check it out. Okay, it's going very nice profit guys. This trade has given in our live stream Ethereum, and not only small quantity. Look at this, 2000 3200, right? 3200 to 2300, that means 1000 pips of profit we will capture if it works as we expect. It's 1000 pips, right? Yeah, 90 pips, not it 1000 pips or 100 pips, whatever. 2300 to 3200, that means it's like 100 pips. Okay, 100 pips, we will capture 100 pips is equal to like $1000. We will make it if it works as we expect. Like TP is here. If I put, check it out, $900 there. Yeah, so 100 pips of target. And what is our SL? Like here, so 20 pips of SL. 1:5 trade. You can check it out in Ethereum. Reason of Ethereum trade, check it out. There was the order block here which market tap and gone 80 to 90 pips. After that market break this demand order, did a retrace. Okay, I was planning to go for buy, but I saw that it's not doing any there is no volume in the market. Okay, what it happened, it did a retrace. So that's the reason I'm in a sell set right now. Okay, तो यहाँ से यहाँ तक सेलिंग गिरना चाहिए इथेरियम को. Check it out and tell me in comment box what's your view, and see the running profit. Okay, in live stream took this trade, and you can see anyone has any doubt in regarding this analysis, let me know regarding the setup.
Anyone? Tell me in comment box. And gold, look at this gold. Mentioned clearly that it will fall. It is doing a retrace. It will be like a damn fall. Okay. Okay, anyone? What's your view in Ethereum and in gold?
ओके मार्केट स्ट्रेट फॉल, और भी गिनना चाहिए मार्केट को, सीधा यहाँ तक तो भाई गिनना चाहिए मार्केट को, ठीक है, मार्केट को गिनना चाहिए और भी ये, लेकिन यहाँ पर जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन आ सकता है यहाँ पर, इसीलिए मार्केट धीरे धीरे करके मूव हो रहा है ड्यू टू दी POI, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही मार्केट धीरे धीरे करके मूव हो रहा है। सो इफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक्स, तभी हम लोग अच्छा खासा एक सेलिंग मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, नहीं तो ऐसे मार्केट मूव हो जाएगा, धीरे धीरे करके मूव करेगा। तो हम लोग देखना पड़ेगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने क्या बोला कि भाई रेंज ब्रेकआउट होने पर ही आप लोग को इस ट्रेंड, कंटिन्यूस ट्रेंड पे आप ट्रेड करो एंड यू विल मेक अ प्रॉफिट। शेयर दिस ट्रेड इन आवर टेलीग्राम, ठीक है, एंड जो जो देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई आप लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट ओनली यू वोंट मिस आवर चैनल, ठीक है। जैसा हम लोग यहाँ पर अपडेट देते हैं उसी तरह आप लोग ट्रेड अपडेट भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, ज्वाइन करने ला। एंड अभी इस जोन से ही मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है एंड रिजेक्शन दे रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो बेटर वी शुड वेट फॉर दिस जोन टू ब्रेकआउट। ये वाला जोन ब्रेकआउट कर दिया तो तभी हम लोग को एक सेलिंग मिलेगा। इफ इट डजंट ब्रेक देन इट विल बी हार्ड फॉर अस टू होल्ड इन अ सेल साइड, दैट्स द प्रॉब्लम।
चाय पानी तो नहीं पिया। मेरे हिसाब से तो मैं तो देख रहा हूँ सेल, ठीक है। अभी भी आई एम लुकिंग एट दिस सेल मार्केट। लेट मी नो व्हाट यू गाइस सीइंग हियर। व्हाट आई कैन सी हियर, मार्केट ब्रेक दिस डिमांड, रिमूव्ड ऑल दिस सेलर्स। अभी हम लोग देखना पड़ेगा कि 5 मिनट का कैंडल क्लोज, 5 मिनट कैंडल क्लोज, गो फॉर दिस सेल, ठीक है। नहीं तो अभी एंट्री करना चाहते हो कर सकते हो, ये सेल आप लोग रख सकते हो 98 पर, लेकिन थोड़ी बहुत बड़ा हो जा रहा है ये सेल, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। आप लोग 1 मिनट का कैंडल क्लोजिंग पर देखकर आप लोग एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू गाइस सी, जो मैंने एनालिस्ट आप लोग को दिया था मैंने, वो कंटिन्यूस एनालिस्ट अभी भी चल रहा है ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। आप लोग चाहते हो आई विल कैन शेयर यू द सेम एनालिसिस इन आवर ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। रीज़न क्या है सेलिंग का, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई विल जस्ट शो यू so that you don't get a confused in that, just to so that will it work, no। so ऐसे करके मेरे को check it out, give me a minute। ओके, यहाँ से ये इधर चला गया, मैं ये देख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रेड जो मैंने लाइव स्ट्रीम पर दे रहा था, वही ट्रेड मैंने यहाँ पर भी एनालिस किया हूँ। दिस सेम एनालिसिस हैज बीन शेयर इन आवर टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम पर शेयर किया हूँ ये वाला ट्रेड एनालिसिस, मैंने 5 मिनट या 15 मिनट पे मैंने देखा ये वाला ट्रेड, ओके, ये वाला, चेक इट आउट। सो यानी कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये मेरा व्यू है एंड पर्सपेक्टिव है, लेकिन सबका अलग अलग है। एंड मे बी यहाँ से आप लोग को रिजेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि लोअर लो यहाँ पर है, हायर हाई अभी बनाया, लेकिन इट्स नॉट अ वैलिड हायर हाई, क्योंकि हायर हाई तो यहाँ पर है, राइट। फिर भी आप लोग रीसेंट लो जो देख रहे हो, ये है रीजन लो, रीसेंट हाई है ये। तो आप लोग ट्रैक करके भी देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ये वाला लो से ये वाला हाई। तो कम से कम 0.5 जो देख पा रहा हूँ 3990 तक आना चाहिए, अभी 94 पर है। एंड ये मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर रिजेक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर फेयर वाली गैप नहीं है। फेयर वाली गैप रहता तो भाई और भी अच्छा खासा एक रिजेक्शन आप लोग को मिल सकता, ठीक है। देयर इज नो फेयर वाली गैप हियर।
तो कम से कम आपको यहाँ तक मिलेगा, यहाँ से मिले तो आपको रिजेक्शन यहाँ से मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता क्योंकि डिमांड जोन यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एंड प्रीवियस डे का लो भी यहाँ पर ही है, दैट्स ऑल। डिमांड जोन हियर, demand zone is here. So what we will see, market gonna come up to here. Otherwise, if it form a 5-minute candle and close a candle above this, then only we will get a bullish from this fever retrace. Otherwise, I don't think it will do a fever retrace because it's not a valid area and valid zone to take a retrace. But you will get a rejection, a little bit of rejection you will get from here. But my target is up to this demand. You can see this trade I have shared in our Telegram. Check it out. Nothing has changed. I mentioned that analysis with a train line, all these things. So you can see that what did I say? After break this train line, wait for retrace. Then when you get a rejection, direct sell, right? So I will show you where it happened. ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे ये वाला कैंडल पर मैंने मेंशन किया था. सो सेम थिंग्स टच दिस लाइन, नो दिस वन, राइट. सो यहाँ से देखो, यहाँ पर market break, okay, check it out. Market break, did a retrace here, after got a rejection. You can see after retrace form with a bullish candle, after got a rejection it started to fall. आप लोग यहाँ से भी कैलकुलेट करके भी देखो तो कम से कम आपको 150 पिप्स मिला है. एंड दिस ट्रेड हैज बीन शेयर टू आवर टेलीग्राम एनालिसिस फॉरवर्ड मैसेज, यू कैन सी दैट. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन बिकॉज यू गाइस जस्ट वाचिंग. आई थिंक यू गाइस हैवंट टेकन दिस ट्रेड ऑल. तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मिस मत करो ये इस तरह का ट्रेड. आप लोग देखोगे तो भाई ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है, लेकिन यहाँ तक जाने से पहले बहुत बार आपको रिजेक्शन मिलेगा. इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आई बुक सम ऑफ माई पार्शियल, देन बाकी मैं ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट रखता हूँ एंड टीपी यहाँ तक रख देता हूँ. टीपी आए तो आए, नहीं तो मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ. मोस्ट ऑफ माई प्रॉफिट लाइक 50 to 60% आई बुक माई प्रॉफिट हियर. देन व्हाट आई डू, आई होल्ड द ट्रेड विद अ कॉस्ट टू कॉस्ट. देखने में लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ही तो आया, कितना पिप्स आ सकता है, बट इफ यू जस्ट सी फ्रॉम हियर टू हियर, look 100 pips, okay, 110 pips seems small, but by the way check it out. Okay, look at this retrace, then sell, again same trail line retrace, then sell. एंड अभी भी सेल आना चाहिए मार्केट को. रीजन क्या है, ये वाला जो डिमांड एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से बाइंग नहीं हो रहा है अभी. ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है. इफ अ कैंडल क्लोज अबव दिस, देन ओनली वी विल गेट अ बाई. इसके ऊपर जब एक कैंडल क्लोज करेगा, मेरे को नहीं लग रहा इसके ऊपर जब जाएगा तभी बाइंग है, क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ तक तो आएगा, 99 तक आएगा, आपको 20 पीस आपको मिलेगा बाई की तरफ. ठीक है, व्हाट आई सी हियर कि भाई यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन आफ्टर फॉल 1 मिनट का रिजेक्शन है यहाँ पर. ठीक है, 1 मिनट का आपको रिजेक्शन मिलेगा. छोटा मोटा जोन है, बट एवरी जोन इज वैलिड फॉर गोल्ड. देखने में लग रहा है कि भाई यहाँ से रिजेक्ट करेगी कि नहीं, तो हम लोग ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते, बट इट वर्क्स क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग रियल मनी एंड यू आर हार्ड अर्निंग मनी. सो ऑलवेज वेट पेशेंसली, ट्रेड करो एक ही, बट परफेक्ट ट्रेड होना चाहिए. ठीक है, एंड यहाँ से आपको यहाँ तक मिलेगा, जाए तो लाइक 30 पिप्स आपको मिलेगा प्रॉफिट की तरफ. देन उसके बाद एक सेलिंग आ सकता है. मैं तो सेलिंग नहीं दे, आई मीन मैं तो बाइंग नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा व्यू है कि ये सेलिंग जाएगा. ठीक है, एंड सेलिंग का कैंडल फॉर्म हो रहा है, लेट्स सी. अच्छा खासा आ जा भाई, लाइक 91, 94 टू 91, 92 कम से कम आ जाएगा. एंड ये यहाँ तक तो मेरा टारगेट है. रीसेंट लो है यहाँ पर, रीसेंट हाई है उधर, तो मैं तो ट्राई करूँगा कि भाई बाइंग देख रहा हूँ तो यहाँ से बाई टू हियर 0.5 आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, 0.6 यहाँ पर मिलेगा.
तो यहाँ तक तो भाई कम से कम फिर से रिजेक्शन मिलेगा तुमको 89 तक, ठीक है। एंड आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? कहाँ कहाँ से रिट्रेस है, कहाँ कहाँ से रिजेक्शन है, आप लोग का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आप लोग को देखना है कि कहाँ से रिट्रेस हो सकता है, कहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ फिबोनाची। लेकिन फिबोनाची इधर उधर से डायरेक्टली ड्रॉ मत करना, एक्चुअली यू शुड हैव अ प्रॉपर लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग एक रिजेक्शन रिट्रेस देख सकते हो। सेकंड, आप लोग को देखना चाहिए बीचों पे, आई मीन लाइक नॉट लाइक इधर से रिट्रेस मत देखो, इधर से रिट्रेस मत देखो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर रिट्रेस, लाइक रिट्रेस कहाँ पर होता है, सेंटर पे होता है। मान लो आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से एक सेल कर रहे हो या यहाँ से बाय करो, बीच पोजीशन पे ही बहुत बार आपको क्या मिलेगा, रिट्रेस मिलेगा। रीजन क्या है, एक तो फेयर वैली गैप मिलेगा सेंटर पे ही, कहाँ पर भी आप देखोगे जैसे 1 मिनट का यहाँ पर एक फेयर वैली गैप फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हियर टू हियर। तो आपको यहाँ से आप लोग को रिजेक्शन मिल सकता है। तो एवरी जोन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन गोल्ड, ठीक है। देन आफ्टर फ्यूओ रिट्रेस भी आपको देखना चाहिए कहाँ से फ्यूओ रिट्रेस हो रहा है, तो दोनों ही है रिट्रेस के लिए। बाकी आप लोग ऑर्डर ब्लॉक तक फॉलो करो। एंड वन मोर थिंग्स कि आप लोग ट्रेंड को देखो, ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन पे है, इज इट डिड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर और व्हाट। तो मेरे को बोलोगे तो भाई मैं तो देख पा रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो चुका है। ये जो रेंज कर रहा था रेंज, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, राइट। आप लोग क्लियरिटी नहीं देख पा रहे हो, बट आई विल रिमूव द कॉन्ट्रास्ट सो दैट यू कैन सी दिस, ओके। तो ये वाला भी मैं रिमूव कर देती हूँ, क्लियरिटी आप देख सकते हो। ये वाला थोड़ा साइड कर देती हूँ यहाँ पर। एंड अनदर कलर आई कैन पुट दैट। तो हम लोग का अभी ट्रेंड देखना पड़ेगा। ट्रेंड क्या है, ये वाला जो लो है ये यहाँ से यहाँ तक आया, स्पाइक मारा, दैट मीन्स इट मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सी एच ओ सी बना दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे करके मार्केट ने फॉल किया था, रिट्रेस किया। रिट्रेस कहाँ से किया, यहाँ पर आप लोग सेलिंग कर सकते थे, ठीक है, ड्यू टू दी ऑर्डर ब्लॉक। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलवेज वेट फॉर द रिट्रेस। एक तो फेयर वैली गैप से रिट्रेस होता है, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर आप लोग देखो देयर इज नथिंग हियर आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर, यू कांट सी हियर देयर इज नो प्रॉपर फेयर वैली गैप। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर ब्लॉक फॉर द रिट्रेस। तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस किया है, यहाँ तक आया। अभी मार्केट ने क्या किया है, छोटा मोटा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया। फर्स्ट इट डिड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस एरिया सी एच ओ सी। उसके बाद मार्केट ने बनाया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हियर बी ओ एस, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, सीधा फॉल। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने के बाद अभी आपको देखना चाहिए फेयर वैली गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैली गैप आपको 1 मिनट पे देख रहे हो तो 1 मिनट के यहाँ पर छोटा मोटा आपको देख पा रहे हो, बट आई डोंट सी कि भाई ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। क्योंकि फेयर वैली गैप एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग एंड ओपनिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कम से कम यहाँ तक तो मिल जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, बट उसके बाद एक रिजेक्शन आना चाहिए क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, रिट्रेस करके यू नीड टू फॉल एंड दिस व्हाट हैपेंस। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ये फेयर वैली गैप पर कैंडल 9 सेकंड बाद जब क्लोज करेगा, नीचे की तरफ क्लोज करेगा एंड यू विल गेट अ सेल। तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हो, छोटा मोटा आप लोग रिस्क लेना चाहते हो भाई 0.01 पे ऐसा ट्राई, ठीक है, बैक टेस्टिंग के लिए आप लोग कर सकते हो ट्रेड, ऐसे ले लो एंड यहाँ पर आप लोग टारगेट रख सकते हो, ठीक है। सो दिस आर दी बैक टेस्टिंग के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट इट्स ओके, आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। गो चार्टिंग है, गो चार्टिंग पर प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इसी तरह आप लोग भी ले सकते हो ट्रेड एंड चेक इट आउट, यू विल फाइंड आउट दी सेलिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई मैं इतना भी कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो मार्केट को कैसे क्या मूवमेंट दे सकता है, क्या होता है, ठीक है। इसको फॉलो करके आप लोग लो ले सकते हो ट्रेड, ठीक है। पहले छोटा मोटा आप लोग ट्रेड करो, देन आफ्टर यू कैन एंटर विथ अ हाई रिस्क व्हेन यू ग्रो योर कैपिटल। तो एवरी जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। आप लोग को लग रहा है कि ये छोटा मोटा जोन है, यहाँ से रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट नॉट लाइक दैट।
every zone works perfectly, every zone gives you a perfect momentum with a proper retrace and rejection. ठीक है, तो इसी तरह आप लोग देख सकते हो, यही हो रहा है अभी मार्केट पे। तो व्हाट वी कैन डू, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है सीधे से ज़्यादा आपको 99 to 97 मिल भी गया इफ़ यू हैव टेकन। ठीक है, तो मैं नहीं लिया ट्रेड, बट आई टोल्ड यू द एक्सप्लेनेशन एंड द रीज़न, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो एक ही जोन पे आप लोग कितने सारे ट्रेड ले सकते हो ये भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो छोटा मोटा टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या है आपको एफवीजी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए थे, एक ट्रेड लिए थे, यहाँ से सेलिंग किए थे। रीज़न क्या था, रेंज हो रहा था, रेंज ब्रेकआउट किया, सीधा डायरेक्टली सेल, सेल मिला हम लोग को प्रॉफिट। आफ्टर दैट यू कैन सी हियर मार्केट मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर राइट फ्रॉम दिस एरिया, कॉज यहाँ पर पूरा रेंज हो रहा था, रेंज ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मार्केट ने स्पाइक किया, रिट्रेस किया। ठीक है, फिर से आने के बाद आप देख सकते हो प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया था। प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद कहाँ तक मार्केट ने गया है, यहाँ से यहाँ तक, which given us a 150 pips, ठीक है, to this from this order block. After that you can see that market made a breakout structure. From this breakout structure you have to wait for the proper retrace zone. retrace कहाँ कहाँ से होता है, एक तो फेयर वैल्यू गैप से होता है, फिर वो retrace से होता है, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक से होता है। retrace रिजेक्शन पे आप लोग को ऐसे मिल जाएगा। तो जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी मोड़ी चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद अभी एक छोटा मोटा रेड कैंडल आप लोग देखें कि यहाँ से फॉर्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो कितना पिप्स आ रहा है, 20 पिप्स आ गया। तो ये सब आप लोग को स्कैल्पिंग के लिए टक टक आप लोग एंट्री करो, ऐसे उसके ऊपर रखो। ठीक है, लो रिस्क पे आप लोग बैक टेस्टिंग के लिए इसी तरह ट्राई कर सकते हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद कोई भी एक फेयर वैल्यू कैप और फिवो रिट्रेस इसको यूज करके ले सकते हो। तो रीसेंट हाई है ये, रीसेंट लो है ये। ठीक है, रीसेंट हाई से आप लोग देखो रीसेंट लो तक, व्हाट यू कैन सी मार्केट 0.5 यहाँ पर है, 0.6 यहाँ तक है। तो मार्केट धीरे धीरे करके और भी ऊपर जा सकता है। तो ये जो फेयर वाले गैप हम लोग ड्रॉ किए हैं ये है 50-50 का। ठीक है, मतलब आफ्टर 1 मिनट इफ इट कैंडल क्लोज अबोव 4002 देन इट विल बी अ बुलिश। ठीक है, एंड कोई भी मान लो कि मैं बाय ले रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो ट्रेड, क्योंकि 0.5 एंड 0.6 इज द मोस्ट क्रूशियल एरिया फॉर मार्केट टू रिट्रेस। ठीक है, तो मैं जो देख रहा हूँ कि भाई 0.5 पे टैप हो गया, 0.6 पे टैप हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग को एसएल ऐसे रखना चाहिए। इट्स समटाइम्स इट विल बी लाइक बिग एसएल, बट आप लोग क्या करना चाहिए, फर्स्ट एंटर ऑलवेज एंटर विद लो रिस्क। जब आपका 10 से 15 पिप्स और 20 पिप्स ऊपर जाता है तब ऑलरेडी और एक लेयर आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आपका एसएल होना चाहिए 50 पिप्स, नॉट मोर देन दैट। 50 पिप्स के ऊपर कोई एसएल मत रखना, दैट मीन्स इट्स नॉट लाइक प्रॉपर ट्रेडिंग। ठीक है, आपका ये इसलिए 50 पिप्स के ऊपर है, आप बुक कर रहे हो 20 से 30 पिप्स, तो भाई इट्स नॉट फॉर दिस स्कैल्पिंग। ठीक है, जो जो बोल रहा है स्कैल्पिंग है ये ट्रेड विद 50 पिप्स 70 पिप्स ऑफ ये भाई उसको स्कैल्पिंग नहीं बोलते। ठीक है, तो आप लोग देख लो, एंड ये भी देख पाओगे तो आपको 1:2 तो आपको कम से कम देख पाओगे। ठीक है, ये वाला लो तक आप लोग टारगेट करो तो भाई 1:2 ऑब्वियसली आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने यहाँ से नहीं ले रहा हूँ ट्रेड, एज अ एक्सप्लेनेशन एज अ एनालिसिस आप लोग को मैं दे रहा हूँ, आप लोग चेक करो एंड कितना काम करता है ये देखो। ठीक है, वॉच इन ट्रेडिंग, ऐसे नहीं कि भाई ट्रेडिंग पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, आपको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कहाँ कहाँ से रिट्रेस हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या रीज़न है। तो आपको ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन ट्रेडिंग राइट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, फीवो, देन डोजी कॉन्सेप्ट, देन हैमर कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसी तरह फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा ट्रेडिंग पे। बट ऑलवेज यू शुड हैव अ नॉलेज इन एवरी कॉन्सेप्ट, बट ट्रेड लेने के लिए भाई आप एक ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जब आप रखोगे तभी आपको आइडिया आएगा कि क्यों रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, समटाइम्स यू सी हियर दैट इज अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मान लो मेरा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया एंड उसके बाद मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, तो हमारा क्या होगा, ऑलरेडी एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पर एसएल रख रहा हूँ, इट विल डू अ स्पाइक हिट माई एसएल, देन उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा लाइक पेन। ठीक है, बराबर हो रहा है, तो फेयर वैल्यू गैप को ऑलवेज एक्सटेंड करके रखना चाहिए। अभी देखो ये वाला जो मैंने आप लोग को बोला एनालिस्ट दिया, तो ये कैसे काम कर रहा है कि नहीं, राइट, इट्स वर्किंग, कि फेयर वाली गैप भी है, फिवो रिट्रेस भी, ये वाला जोन ही 0.5 का है।
इफ यू डोंट बिलीव जस्ट चेक इट आउट, यहाँ से नहीं, ये वाला ग्रीन कैंडल, ठीक है। एंड आप देखोगे ये देखने में छोटा लग रहा है बट इट्स अ 20 पिप्स। एंड ये वाला रिसेंट हाई है, ये है रिसेंट लो, चेक इट आउट। 0.5 पे टैप हुआ, यहाँ से भी आप लोग बाय ले सकते थे, ठीक है। एंड यहाँ से बाय करते तो आप लोग को यहाँ तक मिल गया प्रॉफिट। मान लो आप लोग 0.5 से बाय कर रहे हो, देख सकते हो 28 पिप्स आपको मिल गया, जहाँ पर आपको बहुत सारे जोन अब देखोगे तो भाई 15-20 पिप्स का ही टारगेट मिलता है, यहाँ पर आपको 28 पिप्स मिल रहा है। मान लो तुमने फेयर वैली गैप से ट्रेड लिए हो, फेयर वैली गैप से भी ट्रेड लेने के बाद भी आपको मिल रहा है कम से कम 18 पिप्स, ठीक है। स्कैल्पिंग आप लोग को मिल रहा है, लेयर ऐड करोगे तो और भी प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो ये था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया? फेयर वैली गैप से आप लोग कैसे ट्रेड करना चाहते हो, कैसे ट्रेड करना है, यू गॉट अंडरस्टूड? ट्रेड कैसे करना है आप लोग को मैंने लाइव पे परफॉर्मेंस करके भी दिखा रहा हूँ, बैक टेस्टिंग भी करके दिखा रहा हूँ, हाउ इट वर्क्स, कितना आपका एसएल टीपी हो रहा है ये भी आप लोग देख सकते हो, राइट। छोटा मोटा ये एसएल बन रहा है, कहाँ तक 99 टू 4002 जाए जाए तो भाई 20 से 30 पिप्स ही जाएगा आपका, तो 1:1 तो मिल गया, राइट। चेक करके देखो, छोटा मोटा जोन से भी आप लोग को रिट्रेस मिल रहा है, लुक एट दिस भाई, 30 पिप्स आप लोग को मिल रहा है। और क्या चाहते हो भाई? एनालिसिस ऑन इट्स पीक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक टैप, सीधा सेल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फेयरवेल गैप टैप, सीधा सेल। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। इफ़ यू वॉच माई स्ट्रीम यू नो दैट मैं ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयरवेल गैप पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। एंड इसी तरह मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बहुत सारे ट्रेड लिया हो, जैसे आई थिंक इफ़ यू लुक एट फ्राइडे स्ट्रीम और मंडे स्ट्रीम, मैंने 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फेयरवेल गैप पे टैप हुआ, उसके बाद 480 पिप्स हम लोग कैप्चर किए थे, वो वाला ट्रेड। यू कैन सी दैट इन आवर लाइव ट्रेड, ठीक है। तो लाइव पे ये सब मैंने ट्रेड लेता हूँ, मैं ट्रेड एनालिसिस देता हूँ। चेकआउट करके देखो, ठीक है। अरे गाइस हैप्पी नाउ कि भाई आप लोग अभी तक ट्रेड भी नहीं लिए तो भाई 34 पिप्स तो आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। 33 पिप्स फ्रॉम आवर एंट्री, ऊपर से 0.5 जोन से ले लेते तो भाई और भी अच्छा आप लोग को प्रॉफिट मिल जाता। Anyone has any other doubt like another concept you want to learn, so let me know in comment box कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट आप लोग सीखना चाहते हो दूसरा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट गाइस, चेक इट आउट, सीधा आप लोग को मिल गया 99 से 95 भाई, 40 पिप्स आप लोग को मिल रहा है। इसको बोलते हैं भाई परफेक्ट एनालिसिस, बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। सीखना चाहिए, बट हाँ ऑलवेज यू विल फाइंड ए एसएल, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हर ट्रेड पे ही प्रॉफिट मिलेगा, तो भाई मैं फुल्ली बिलियनर हो जाता एंड इसी कॉन्सेप्ट पे ऑल वुड हैव टेकन ट्रेड। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो गिव्स अस अ प्रॉफिट एंड दिस कॉन्सेप्ट आई यूज मोस्ट। इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो यही है मोस्टली, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयरवेल गैप, इसको मैं यूज करता हूँ। देन डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई पे बहुत ट्रेड लेता हूँ मैं, क्यों? डिमांड सप्लाई इज वेरी इजी टू टेक ट्रेड। वेरी इजी मतलब क्या है कि तुमको यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, फेयर वाली गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, नथिंग। आपको दिन में एक तो डिमांड पे ट्रेड मिल जाएगा, नहीं तो सप्लाई पे ट्रेड मिल जाएगा। एक ही ट्रेड लो भाई, नेक्स्ट डिमांड टू नेक्स्ट सप्लाई तक टारगेट रखो, नहीं तो फीवो का 50% का रिटर्न जहाँ पर है वहाँ तक टारगेट रखो, ठीक है। तो अभी लाइव पे हम लोग कितने ट्रेड लिए हैं? एक बाई ट्रेड हम लोग लिए थे, यहाँ से आप लोग को पता ही है, आप लोग टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे देख पाओगे, उसका एनालिसिस मैंने दिया था। यहाँ से हम लोग सेलिंग किए है, सेलिंग का भी एनालिसिस मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, उसका भी प्रॉफिट हुआ है। थर्ड ट्रेड यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड, ठीक है। आप लोग के सामने ये वाला एनालिसिस परफेक्ट कर चुका हूँ, तो क्या 38 पिप्स, बट एटलीस्ट तो भाई आपको 1:1 के ऊपर तो मिला है, राइट। 38 pips has been, okay, 38 pips done, okay, you can say done or captured. After like 20 to 30 pips, what you can do is book 40 to 50% or 60% you should book. Baki after 30 to 50 pips, if it goes, you can book
60 percentage. So after like that 100 pips, it should be your 100 percentage profit book. After 50 pips, 50 percentage profit book. That way what will happen is after 10 pips, extra 10 pips, you can book off your profit, and if it goes again and hit your break even, already you have captured more profit, right? So you don't have to worry for that. इसी तरह का आप करो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट. चेक इट आउट. परफेक्ट रिट्रेस विद एनालिसिस भाई. ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो, एनालिसिस भी देख सकते हो. क्या लगता है मेरे को बताना. आर यू guys learning something? If you haven't understood what I said, whatever the analysis I taught you right now, a strategy, just do rewind a 10 minute before so that you can learn this strategy. It works very well, like 60 to 70 percentage it works. And try to use it in a long time frame, like 5 minute or 15 minute. It will be gives us a better, because the minimum the candle is, the more you get a clarity. In 1 minute you will find out so many fair value gaps, so many order blocks. Okay, and if you want to learn more, then DM in our Telegram. We will share you the PDF and the course how to identify the order block, fair value gap. And if you want any consultant, you can ask our Telegram. Okay, I know most of you are watching here, they know already how to trade, and some of you are in a probably some of you are in a break even and loss due to you don't understand what's happening right in market, why it's going opposite. तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप लोग देखो मार्केट को, पहले अंडरस्टैंड करो बिफोर एंटरिंग विद अ रियल मनी. ऑलवेज डू बैक टेस्टिंग and create an account, demo account with $100. Think that as your real money and do practice until that $100 make it into $500. Not like oversized lot with only 0.01. Always try with at least 3 months. Give you at least 3 months to 6 months. You know that most of them has came at top level after 5 years, 6 years. So it will take a time. Many of them has gone to that level within a 6 month. Okay, I know, but they did with a very back testing. They came with their own strategy, you know that. So always do practice, do back testing, and you have to give time in trading. ठीक है, ट्रेडिंग पे आपको टाइम देना पड़ेगा. If you just close your eyes and blink, you will see 100 pips of fall, 100 pips of gone upside. Okay.
Okay, what do you think, guys? Being silent without talking, just have you got understood? Did you guys learn something? Say it out loud. Check it out our analysis and strategy which I have shared. If you have any doubt regarding our setup, our analysis and strategy, you can ask me. Comment box is open to you, right? Just check it out our 10 minute before I explained the reason behind taking trade, what strategy I use for taking trade and why it's in a sale, why market need to go upside. These are the things I mentioned you clearly. Okay, so you can see the change of character. Market came and tap in this order block. You should take a sell from here. Market fall. You got a target up to here. From that, you got a breakout structure. Why? Change of character, continuous trend. If it candle close above this, then you would have got a new change of character, right? But we saw that it closed below this candle. That means it tap in order block, and you can see that was the high. It break this breakout structure. Okay, then market came and tap in this fair value gap. After this tap in fair value gap, look at this, it gone 38 to 40 pips. Okay, you can check it out. After that, market came and gone through the fair value gap. You know that why I extend my SL up to here, due to the fewer retrace. Some of you trade with a fair value gap, some of you trade with order block, but you keep your SL above that. Like that, if you have kept, that means your SL would have hit. I extended due to knowing that. Okay, why I extended? Due to the Fibonacci recent high and recent low. What I see here, 0.6 zone. Where is the 0.6? I have to keep my SL above the 0.6, and you have to cut your trade after the candle close. Otherwise, what would happen? It will do a spike, then go to this zone. Check it out. So understand the market, learn from the concept.
দুদিন আগে 24,000 জন দেখেও নিয়েছে না, ভালো। श्रुति जी को दे दो, श्रुति जी पूछेगी। I hope you got understood what is the market, how it works, how market moves, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट मूव होता है, ये भी मैंने बताया। तो डोंट फॉरगेट टू चेक एंड सी व्हाट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग अंडरस्टैंड करो पहले, देन यू कैन टेक ट्रेड। Take our analysis, not even a single like losses while you wait for the market. It's not about like any zone you take a trade. Wait for the market, be patient, take only one trade and you can make some profit in it, right? So it worked, we made it. Let's go, ठीक है। तो I hope you all made a good profit, so I wish you have a happy Friday, ठीक है। All enjoy your profit. Look at this new trade, new analysis. I don't have to share, I don't have to say, ठीक है। आप लोग अंडरस्टैंड करो, मैंने अभी लाइव पे ये वाला एनालिसिस दिया था, राइट। लाइव 48 pips, what are you expecting more than that, right? Book some of your profit, see my ASL and TP. If you can't keep your 20 pips ASL, then what can we do, right? Check it out.
48 pips. This is 150 pips. Buy we have taken, which is here up to, you can check it out, 140 pips. Okay, all this trader, look at this, it's here 100 pips. Here we took a sale, which is 150 pips. I shared this trade in our telegram, check it out. I did analysis लाइव पे ट्रेड आपको एनालिस करके दे रहा हूँ, कितना छोटा ये सेल है, टीपी आप देख सकते हो, 48-50 पिप्स आपको मिल रहा है, तो यू शुड बी हैप्पी ऑफ मेकिंग मनी एंड यू शुड क्लोज द डे विथ प्रॉफिट. ओके, तो इसलिए मैं आज क्लोज कर रहा हूँ विद अ प्रॉफिट. So thank you for watching guys, and don't forget to join our telegram, because this type of analysis strategy I share in telegram. I've been telling you multiple times, and all the trade execution you will find out there. So hope have a great Friday and have a great weekend. ठीक है, enjoy your profit. अभी भी देख सकते हो भाई, सीधा अच्छा खासा जा रहा है, and ये कहाँ तक जाएगा भाई, यहाँ तक भाई. That's my demand target. Okay, don't forget guys, check it out. More than 50 pips. I hope you guys are happy. Wow, it feel happy even though if you don't take trade, but at least your target, like look at this, 60 pips, and your SL small, as you can see that my target is done bro, done. Look at this. Okay, so I'm happy now that at least I made you guys make profit, and I'm gonna close the stream. The reason of my target up to here, due to the supply, and not a supply, demand with a point of interest. Booked, all of you have booked your profit, happy now. So don't take over trading, don't do. Okay, enjoy your profit, close the trade, uninstall your app and enjoy. Take it. Thank you guys, thank you for watching. So we will do the streaming on Monday. Okay, so back to back this week we made a back to back profit, huge profit. Check it out, our 5 days streaming. If you find out any ASL, let me know, cause after taking trade already we made 30 to 40 pips of profit, then after only it hit our ASL. Okay, so that's different, but it's not like we took a trade and directly hit our ASL, so it didn't happen like that. तो आप लोग चेक कर सकते हो, दिस होल वीक आप लोग आपका ट्रेडिंग व्यू पर देख सकते हो. आई मीन लाइक यू कैन सी आवर लाइव स्ट्रीम एंड यू कैन चेक इट आवर टेलीग्राम. ओके, टेलीग्राम पर भी देखो, नॉट इवन अ सिंगल एसएल इज बीन हिट दिस वीक. यूजुअली हम लोग इतनी ट्रेड नहीं देते क्योंकि वी वेट फॉर द जोन. ऐसा नहीं कि भाई कोई भी जोन पे कुछ भी दे देते हैं, ठीक है. वेट फॉर द जोन, टेक द ट्रेड, मेक मनी एंड कम आउट, दैट्स ऑल. पर डे 2 or 3 ट्रेड, बट हाई क्वालिटी ट्रेड, not a quantity but quality. Okay, it's not a 48 pips. Before we close, let me count down and tell you how many pips have you captured from here to here. 70 pips. Okay, let's be honest and say that 70 pips we have captured. Okay, have a great day, have a great weekend. So see you guys, enjoy your profit. Thank you guys, bye bye.